हा.
हेलो हेलो। आवाज यस निखिल, अरे आवाज ही नहीं आ आ रही रही है थी। आवाज आपकी? हाँ आ रही आ रही। वो मैंने व्हाट्सएप पे कुछ पिक्चर्स सेंड की थी, किसी ने उसका सॉल्यूशन देखा है क्या? कल तुमको मैंने जो बताया था वो वैसे किया था क्या तुमने? हाँ किया है, तभी उसमें एरर ही बता रहा है। वो मैंने सब कुछ ट्राई किया है, मैंने आईडी लगा के हैशटैग लगा के सब कुछ ट्राई किया, वो नहीं हो रहा है, वो एरर ही बता रहा है वहां पर। इवन ना पता नहीं क्या। मेंटर जो शरण सर है, उन्होंने भी काफी कोशिश की, बट वो एरर ही बता रहा है वहां। उनको भी समझ में नहीं आ रहा आई। अब उसमें क्या चेंजेस हो गए पता नहीं। पता डॉक्यूमेंट तो जैसे नहीं, लिखा आज है सर वैसे ही से लिख रही थी तुम। इवन ना आपने जो वीडियो भेजा था ना, वहां पे फंक्शन को ऐसे ही कॉल किया है जैसे आज सर ने बताया है, वैसे ही मैं हाँ फंक्शन को वही कॉल कर तो। रही हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा है वहां पर। ओके, देखते हैं अभी सर आने दो ऑनलाइन तो देख लेते हैं फिर। हाँ सर से ही पूछना पड़ेगा। और वो फाइल मुझे भेज दो ना जो तुम्हारे पास है अगर तो। सर ने शायद कल के लेक्चर का फाइल भेजा नहीं। नहीं, मेरे पास कोई फाइल नहीं है। अरे जो सर ने प्रीवियसली जो टाइप किया था ना कोड, वो वाला फाइल बोल रहा हूँ। वही वो डॉम तो ग्रुप वाला। में सेंड की। नहीं मिल रही ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं मिली इसके लिए मैंने हाँ मैसेज तो डाला था। ही नहीं है ना सर में, तो मिलेगी कहाँ से? मेरे पास भी नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी सर से ही मांगने पड़ेगा। गुड इवनिंग सर। अरे वो फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाला लिंक किसी का चल रहा है क्या? नहीं ना? नहीं चल रहा, नहीं चल एक्चुअली रहा, एरर है। नहीं नहीं, अभी नहीं चल रहा, लेकिन मेरा पहले से लॉगिन है ना, तो मेरा चल रहा है। अभी न्यू डिवाइस में मैं लॉगिन कर रही हूँ, नहीं चल रहा। चल रहा है मेरा मेरा तो दो में पुराना चल रहा है। डिवाइस है, अरे वो पहले लॉग किया था, अभी भी नहीं। लेकिन उधर अभी मैं लैपटॉप में उसे लॉगिन कर रही हूँ, तो नहीं चल रहा है, एरर बता रहा है इसमें। पता नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड Good evening, गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। ओके सो सबसे पहले आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व किए ना, मैं 2-3 दिन से परेशान हूँ। ओके बाबू, यस या ओके स्क्रीन शेयर करना। यस सर, ये मेरा कोड है, और जैसे ही आपने कोड बनाया था मैंने वैसे किया, लेकिन मेरा ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है। ओके तो फंक्शन कंसोल तो लगाओ पहले, कैसे वर्क हाँ सर, करेगा। मैं लगा नहीं हूँ। देखो कोड कैसे डिबग करते हैं। प्लीज सब देखना कि कोड डिबगिंग कैसे करते हैं, हाउ टू डिबग आवर कोड, की कोड क्यों फट रहा है, कैसे रीजन समझ में आता है, कैसे रीजन समझना चाहिए। सो एक बार देखना सब। यस सर यहाँ पर ये एरर बता रहा है। add event listener on the word cannot read the properties on line number 15. Okay, uncaught type error कोड में है ना। Yes. ओके ठीक है, मीन्स एड इवेंट लिसनर जो जिस पे तुम फायर कर रहे हो, जिस बटन पे, वो बटन उसको नहीं मिल रहा है ना।
तो क्लिक ऑन लाइन नंबर 1, एंटर करना 1 नंबर लाइन के बाद 2 नंबर पे, यस। और यहाँ कंसोल करो बटन को, पहले बटन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि एड इवेंट लिस्नर फायर ही नहीं होगा अगर उसको बटन नहीं मिलेगा तो। नहीं ऐसे मत करो, यस तो ऐसे भी कर सकते हो, बट इसके बाद कॉमा लगा के फिर बटन को कंसोल करो, जो बटन लाइन नंबर 1 में है उस बटन में हमें क्या मिलता है। तो अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है सर? ये स्ट्रिंग हटाओ, सिंपल जो बटन है ना, वेरिएबल बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंटर, तो वी Yes, हैव sir. टू डॉट लॉग इट बटन, नॉट अ स्ट्रिंग बटन। ये तो स्ट्रिंग आ जाएगा ना यहाँ पे, तो लाइन Okay, नंबर okay. 2 पे जो स्ट्रिंग लगा है ना वो हटा दो, ठीक है। सेव करो, चेक करो कंसोल पे क्या आ रहा है। और अभी के लिए ना, ओके एक सेकंड, ठीक है ठीक है, एक बार आना कोड में आना, और लाइन नंबर 16 to 19 को अभी कमेंट कर दो, क्योंकि अभी फट रहा है ना ये कोड, तो इसको कमेंट कर दो, पूरे लाइन को कमेंट कर दो ना एक साथ, सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश कर दो, कॉपी पूरा सेलेक्ट करो, हाँ कंट्रोल स्लैश कर दो, कंट्रोल जेड करना, यस कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, लाइन भी कर दो, बट ठीक है, सेव करना, ठीक है। अब बटन तुम्हें मिल ही नहीं रहा है, क्या आ रहा है, नल आ रहा है ना, Yes, sir. तो इवेंट फायर कैसे होगा अगर बटन ही उसको नल मिल रहा है, इट मीन्स कि लाइन नंबर 1 में ही प्रॉब्लम है। अभी आपके एड इवेंट लिस्नर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसको बटन मिलेगा तो वो फायर करेगा ही, तो उसको बटन ही नहीं मिला, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग समथिंग लाइक दैट, नल डॉट एड इवेंट लिस्नर। आप एड इवेंट लिस्नर है ना लाइन नंबर 16 पे, वो आप किस पे ट्राई Yes, कर रहे sir. हो, नल पे ट्राई कर रहे Null. हो, नल नथिंग। आप नथिंग पे कुछ ट्राई करोगे तो वो तो आपका इवेंट फायर नहीं होगा ना, वो कैसे पकड़ पाएगा कि आप किस पे फायर करना चाह रहे हो, तो इट इज लाइक अभी ये बटन किसी को उसको क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। तो फर्स्टली वी हैव टू टेक व्हाट, कि हमें देखना पड़ेगा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन क्यों नहीं मिल रहा है, तो एक बार बेसिक डॉट एचटीएमएल में आना, एंटर को कॉपी करो, ओके गिव मी अ सेकंड, ठीक है, बटन आईडी एंटर तुमने दिया है, अच्छी बात है, स्क्रिप्ट ठीक है, बटन आईडी को कॉपी करना, बस एंटर को कॉपी कर लो ना, स्ट्रिंग को कॉपी मत करो, बस एंटर को कॉपी करो, होता है कभी कभी कैस्ट पकड़ लेता है, ये भी इशू नहीं होगा तो फिर दूसरा इशू होगा। इसको कॉपी करो और जाके उस वहाँ फाइल स्क्रिप्ट डॉट जेएस में ना पेस्ट करो, वहां पे गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद एंटर है ना वहां पेस्ट करो, स्ट्रिंग रहने The दो, string में. Okay. स्ट्रिंग 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 नहीं 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 नहीं, स्ट्रिंग नहीं पास करना है ना, एंटर पास करना है, Okay. Okay. आई थिंक यस। एक बार अब ये बटन को अब कंसोल करके देखना बटन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, चेक करना यूआई, एंटर इज नॉट डिफाइंड, ओके ठीक है, एक बार एंटर को स्ट्रिंग में देना, नहीं, एंटर को स्ट्रिंग में दे देना, चेक करना, नल, ठीक है, इट मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार जो स्क्रिप्ट आपने हेड में यूज करा है ना, Yes, sir. इसको आप बॉडी में लाओ और लास्ट में पेस्ट कर दो, ऐसे कैसे नहीं चलेगा, अभी ठीक है सर? एक बार मैं देख नहीं पा रहा हूँ, रुक जाओ, यस यस यस, ओके हाँ ठीक है, अब देखना,
हाँ बटन ही देखो, बटन पे क्या है, डॉट लॉग। अच्छा बटन एंटर आ गया, यस यस ठीक है। एक बार बटन और एंटर का आईडी मिल रहा है, ठीक है। अब ये कंसोल हटा दो, अब ये हटा दो, लाइन नंबर 16 to लेके लाइन नंबर 19 को कमेंट जो किए हो ना वो हटा दो, यस सर। और लाइन नंबर 2 को कंसोल डॉट लॉग हटा देना, उसका कोई काम नहीं है, उसको बटन मिल रहा है। तो डिबगिंग देख रहे हो ना कैसे डिबगिंग करते हैं, कि पहले हमें बटन मिल नहीं रहा था तो हम एक स्टेप ऊपर गए कि फायर कहाँ, प्रॉब्लम कहाँ है, तो बटन में प्रॉब्लम देखा, ठीक है। अब देखना, अब चलना चाहिए, नहीं चला सर HTML कोड में डाउट है सर। इवेंट फायर करो, इवेंट फायर करो, इवेंट फायर करो। आई मीन कि बटन पे क्लिक करोगे तभी तो ये इवेंट फायर होगा ना। सबमिट, अभी click नहीं अरे किया ना। सबमिट बटन क्लिक करो तभी फंक्शन लॉगिन होगा ना तुम्हारा। अरे तो कंसोल, तो कंसोल तब चलेगा ना जब बटन फायर करोगे। अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो वहां पे हिमांशी दिखाया, तो नीचे है हिमांशी। हो गया, यस हो गया ना। यस सर आ गया। तो यस यही है, सर। ये प्रॉब्लम था। रीजन बिहाइंड आप हेड टैग में दे रहे थे स्क्रिप्ट को, तो उसको वो आईडी गेट ही नहीं कर पा रहा था। सर मैंने जो पहले मेरी एक फाइल है उसमें मैंने इसको जेएस के फाइल को मैंने ना हेड टैग में ही दिया है, तो वहां तो वर्क कर रहा है। देखो, इवेंट फायर करने का रीजन होता है कि आपने स्क्रिप्ट हेड में डाल दिया है, तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर हमें स्क्रिप्ट देनी पड़ती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ इवेंट्स आपके पकड़ लेते हैं हेड से, बट कुछ इवेंट्स फायर नहीं होते हैं हेड के अंदर, तो आइडियली हमें हेड ना बॉडी के अंदर पास करनी चाहिए, सॉरी स्क्रिप्ट टैग ना बॉडी के अंदर पास करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच ठीक सर। है, ओके ठीक है गाइस, तो let's start with our topics. So I'm going to share my screen. So okay, so अगर आप कहीं भी फंस रहे हो कोड में, कोई भी इशू आ रहा है, इफ यू आर फेसिंग एनी इशू इन कोड, तो ऐसे नहीं एग्जॉस्ट करना है कि क्या हो गया, मैंने तो कोड सही लिखा। आपके कोड सही लिखने और ना लिखने से मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने कुछ गलत करा होगा तभी कोड अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है आपका मशीन। समझ रहे हो ना, कि अगर कोड सही लिखोगे तभी मशीन अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग से बात नहीं कर रहे हैं कि इफ आई वांट टू ट्राई टू से समथिंग, अगर सामने वाला समझ नहीं रहा है तो हम बोलते हैं क्यों नहीं समझ रहे हो, समझ जाओ मेरी बात को, तो वो बाद में कन्विंस हो जाता है, बट मशीन कन्विंस नहीं होगा। तो मशीन को एग्जैक्ट वही चाहिए जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि अगर आपका कोड कहीं भी फट रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप्स मीन्स कि मान लो कि जस्ट हिमांशी के केस में हिमांशी ने फायर किया था बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, राइट, और वहां एक एरर आ रहा था। तो पहले एरर को पढ़ो कि एरर का प्रॉब्लम क्या है, एरर का मतलब क्या है। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि उस जब भी बटन पे एड इवेंट लिसनर फायर कर रही थी तो वो बटन नल आ रहा था। तो हमें ये समझ में आ गया कि जहां से हमने वो बटन यूज किया है, जिस वेरिएबल में हमने बटन असाइन करा हुआ था, वो बटन ही मिल नहीं रहा है एग्जैक्टली। तो जब उसको मिल नहीं रहा है तो उस पर आप कोई इवेंट फायर नहीं कर सकते हो। तो आपका रूट प्रॉब्लम कहाँ पहुंच गया, अब उस एड इवेंट लिसनर पे नहीं रहा, वो चीजें कहाँ पहुंच गया, बटन पे। इशू कहाँ मिला, बटन के पास। तो आप डिबग करते रह जाओगे अपने कोड को, लाइक एड इवेंट लिसनर के कोड को हिमांशी डिबग कर रही होगी, प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा होगा, बट वहां तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो कोड बिल्कुल सही है, बट प्रॉब्लम क्या था कि बटन नहीं मिल रहा था। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि हमें जब भी हम गेट एलिमेंट बाई आईडी कर रहे थे और वो आईडी जब पास कर रहे थे, तो वो उस बटन वेरिएबल पे असाइन ही नहीं हो रहा था। दैट्स व्हाई बटन की वैल्यू क्या आई थी कंसोल डॉट लॉग में, नल आई थी। इट मीन्स कि जो भी हम गेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉम इन जावास्क्रिप्ट, तो वो हमारा काम ही नहीं कर रहा है। इट मीन्स हमारी कनेक्शन में प्रॉब्लम है। फिर रूट कॉज कहाँ चला गया, बटन के बाद कहाँ चला गया, कनेक्शन के पास। तो फिर क्या होता है कि ये तभी, अब मान लो कि जस्ट फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 1000 लाइन ऑफ कोड, ठीक है, और 1000 लाइन ऑफ कोड में प्रैक्टिकली समझना कि व्हाट आई वांट टू से। सो इन 1000 लाइन ऑफ कोड
आपके एरर्स आ रहे हो, कहीं से आ रहे हो, यू डोंट नो कि एरर आ कहाँ से रहा है, तो आप तो अपने कोड को देखोगे, फिर जहां से आपने रेफरेंस लिया है उसको देखोगे, फिर क्रॉस चेक करोगे, तो इट टेक्स अ क्वाइट मतलब लॉन्ग टाइम। तो ना आपको सॉल्यूशन मिल पाएगा और ना ही आप उस चीज को समझ पाओगे कि चीजें कैसे हैंडल हो रही हैं। तो इन दैट सिचुएशंस your console.log plays a very important role. So what we have to do, हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमने स्टेप्स फॉलो किया हुआ है, जहां पे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, वो वेरिएबल हम यूज करना चाह रहे हैं, वो हर स्टेप पे हमें क्या करना है, कंसोल लगा के चेक करना होता है। समथिंग लाइक इफ यू हैव अ 3 फंक्शंस जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। समथिंग लाइक कि जब हमने लास्ट क्लास में वो बनाया था, क्या बनाया था, एक फंक्शन बनाया था जो कि 2 एंटर बटन को और बटन के हिट करने पे कुछ इवेंट फायर करता था, वहां पे कहीं इशू आ जाए, तो यू हैव अ फंक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि लास्ट लाइन पे हम कंसोल लगा के चेक करेंगे, वहां डेटा सही नहीं मिल रहा है तो हम उसके सेकंड लास्ट मतलब उसके पीछे वाली जगह पे पहुंचेंगे। तो यहां से समझ में क्या आ रहा है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द कोड फ्लो। इफ वी अंडरस्टैंड द कोड फ्लो देन वी कैन राइट एनी लाइन ऑफ कोड। सो जब आप कोड फ्लो को समझोगे तो आप कंसोल्स लगा के चेक करोगे कि डेटा हमारा एग्जैक्टली पहुंच कहां तक रहा है, जहां पे डेटा ब्रेक कर रहा है फिर उसका रूट कॉज निकालना है कि व्हाई आवर डेटा इज ब्रोकन। इज इट क्लियर ना? यस सर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सम टॉपिक्स। Okay. So now we are going to discuss about we have covered all the topics of a JavaScript, a basic JavaScript, where we have a clear understanding of what a data types, conditional operators, logical operators, function declarations, function calling. Apart from that, we have also discussed about some data structures, array and object, right? Then we have discussed about the DOM manipulation, how to manipulate DOM, how to what is the benefit of using DOM. So if we want to interact our HTML CSS code with our JavaScript code, then DOM plays a very important role in it. It gives you access of HTML and CSS code, and you can update or you can do whatever you want to do in your operation with the help of DOM. Is it clear now? Okay. So now so that's all. After that, we have covered some looping techniques, like we have a for loop, we have switch cases, we have a ternary operators, right? So these are some things we have covered. Okay. So today we are going to cover something which is Ecma script ES6. And what is that ES6? So I am going to okay. So now I am going to discuss about so now we are going to discuss about Ecma script. Ecma script. And in interviews, your interviewers ask for Ecma script. They want to know कि you are familiar with Ecma script concept or not. Right? So what is Ecma script? So in short form, you can say that ES, and after ES, E for Ecma, S for script, and after that, the version of Ecma script. So we have Ecma script 6, 7, 8, and something like 9. Okay. So what is Ecma script? So Ecma script is something, if I'm going to Google it, what is Ecma script in JavaScript? Ecma script in JS. So Ecma script, also known as JavaScript,
is a programming language adopted by the European Computer Manufacturer Association as a standard of performing computations in web applications. Okay, यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा समझ नहीं आया. Okay, so ECMAScript आप ऐसा बोल सकते हो, it is the version of JavaScript. So what is the benefit of using ECMAScript? So basically, it helps you to write our JavaScript code in a efficient or a like very optimized way. So it gives you some very important features. It gives you it gives you a access of some important features which you can which you can use with JavaScript. So basically ECMAScript क्या है? एक JavaScript की वर्जन है जिससे आप क्या कर सकते हो? कुछ important features, you have some important key features which you can use with your JavaScript code. Okay, so these features are very optimized way of write with a different good syntax or optimized syntax. It gives you a feature to write your code in a very good or efficient manner. So it is something. What is this? So it is what a version of JavaScript. It gives you some special features in JavaScript. So first ECMAScript is launched in 2016. So it is also called ECMAScript 2016 is also called what? Called ES5. What? ES5. ES5. ES 2000, ES6 or ES6 or ES5. I'm a little bit confused. So let's Google ES6 and ES5. Okay. Okay. So yes. Sorry, screen. My screen is freezed. नहीं सर ठीक है नहीं सर ठीक है Okay. Okay. So basically, ECMAScript, it is 2015. ये 2015 में launch हुआ था, and it is also called what? ES6. Similarly, some features are also added in 2016. So it is called ES7. ES7. Similarly, in 2017, it also gives you some additional features, which is what? ES8, and similarly like ES9. So these are some updates from the JavaScript developers who makes the JavaScript. So it gives you quite a very good features in JavaScript. So they are very popular, they are very optimized, they are very easy to use, and all the like in live projects or in the current projects as a developer, you have to use these ECMAScript things in your code. समझ में आ रहा है ना? तो ECMAScript क्या है? बस एक वर्जन है JavaScript का जिसके अंदर कुछ नए चेंजेस आए थे, नई चीजें आई थी जो कि बहुत ही ऑप्टिमाइज एंड वेरी गुड, बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस लाए थे, बहुत ऑप्टिमाइज टेक्निक्स लाए थे जो आप यूज कर सकते हो विथ JavaScript. इज इट क्लियर ना? सो एनी कंफ्यूजन इन इट? कोई कंफ्यूजन है? नो सर. ठीक है. ओके, सो नाउ we are going to cover some ECMAScript things. So lecture 10, where we are writing our code. I think this is our code. Yeah. Okay. So now I'm going to make another script. So I'm going to write something like ES6 dot ES6.js, and in our HTML file I'm going to change with what?
es6.js. Okay. Now I'm going to write some codes here and some benefits of Ecma script. So first thing is introduced is what? Let and const. This is a very important feature of the JavaScript. So you can write or you can use in our JavaScript codes. So before understanding let and const, I'm going to introduce one important thing, important compiler tool of JavaScript, which is a Babel. So what is Babel? Babel is a compiler of the JavaScript. Babel is what? A compiler of the JavaScript. So when you write something in ES6 or ECMAScript 6 or ES7 or ES8, Babel is a compiler of the JavaScript. So it is in your JavaScript engine. So it changes your ES6 or ES7 or ES8 or ES9 codes in normal or a plain JavaScript. In what? A plain JavaScript. So your machine understands the code, and the main benefit of using this Babel is if you are if you are using any browser. So there is a one concept in JavaScript. This is a compatibility, and what it means ki if you write any code, if you write a code, then it is compatible on all the browsers or not. It is compatible on all the browsers or not, because when you write JavaScript, you want to interact with what? A browser. When you write a JavaScript and with HTML and CSS, we want what? We want to interact with what? Your browser. Browser means Google Chrome, Microsoft Edge, and something like Opera Mini, UC browser, and there are a lot of the browsers are there, right? So if you write any code in ES6 or ES7 or ES8 or ES9, then in JavaScript engine we have a one compiler which is a Babel. So ये इंटरव्यू में पूछता है कि do you know about any compiler which is used in JavaScript? So yes, we know the compiler, and the compiler name is what? A Babel. So Babel, what it do? So आपसे पूछ सकते हैं interviewers कि what is the use of Babel? Do you know about Babel and what is the benefit of using Babel? So Babel is what? A compiler tool of the JavaScript. So when you write any ES6 or ES7 or ES8, it changes the ES6 or ES7 or ES8 codes in normal or a plain JavaScript code. So what is the benefit of using this? So benefit is what? If you write so if it is compatible to the what? A Chrome browser, it is not possible कि ये सारे browser में compatible हो. It is not possible कि वो सारे browser में compatible हो. So something if you write like in ES6, it is okay on the Chrome browser, but it have some issue on what? Microsoft Edge. तो आपका code तो Chrome browser पे it is working good, but अगर आप Microsoft Edge पे आओगे तो वहां आपका कोड हो सके तो नहीं चल रहा होगा. It may be वो नहीं चल रहा होगा. So that is what? A compatibility issue. So when I just Google compatibility of JS, ठीक है, yes. So here we have a browser, and these are some different browsers: Chrome, Edge, Safari, Firefox, Opera, and there are a lot of browsers. You don't know कि आप कौन से browser पे use कर रहे हैं. हो सकता है some users uses Chrome browser, some users uses Safari browser, some uses Opera Mini browser, right? So when you write ES6 or ES7 or ES8 code, it may be accessed by your Chrome browser, but it may be gives you some problems in Safari browser. So how can you deal with that? So you don't have to take tension at all. You have some Babel tool, which is a compiler of JavaScript. It takes your ES6 or ES7 code and changes into what? A normal JavaScript code. So all the browsers understand what you
gives the instruction. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. Yes, sir. No, Yeah. sir. No, Okay. So now starts with, yes, Yuras. सर मैं ऐसे पूछ रहा था ES6 EX7 में क्या डिफरेंस क्या होता है सर? बस अब जैसे आपके फोन का अपडेट आता है तो वो 2016 में भी आया होगा, 2018 में भी आया होगा, 2020 में भी आया होगा। तो उस अपडेट में क्या होता है, कुछ नए चेंजेस ले आते हैं। मान लो कि आप कोई भी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप वर्क करते हो, आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कहीं वर्क करते हो, मान लो आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हो, इफ यू आर अ रिएक्ट नेटिव डेवलपर और रिएक्ट डेवलपर, तो अब क्या होता है कि एज अ रिएक्ट नेटिव डेवलपर अगर मैं कहीं किसी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा हूँ, तो आज मैंने कोई चीज कोई एक फीचर्स डेवलप किया, और हो सके तो मैं चाहता हूं कि अब आफ्टर 2024 उसमें कुछ चेंजेस भी तो आते हैं ना, जो अपडेट मांगता है आपका एप्लीकेशन कि प्लीज अपडेट योर एप्लीकेशन। अगर आप पुराने वर्जन्स को यूज करते हो तो क्या होता है, अपडेट मांगता है आपका एप्लीकेशन की न्यू वर्जन अपडेट करो, अदरवाइज हम आपको एक्सेस नहीं देंगे। तो इन वर्ड केस इसमें क्या होता है कि कुछ नए चेंजेस आ रहे होते हैं। तो सिमिलर लाइक टू जावास्क्रिप्ट, अब जावास्क्रिप्ट का एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब इसके अंदर कुछ नए चेंजेस आए, वे ऑफ राइटिंग कोड कुछ नए डिफरेंट चेंजेस आए। अब ये चेंजेस ब्राउजर तो नहीं समझ रहा है ना, आपने तो अपने कोड में चेंजेस कर दिया, बट ब्राउजर को कैसे समझ में आएगा, ब्राउजर तो वही पुराना कोड समझ रहा है। तो वी हैव वन कंपाइलर टूल व्हिच कंपाइल्स योर न्यू वर्जन कोड इनटू a plain JavaScript code, so your JavaScript engine understands what you want to say. So it is something like ES6 and ES7. A simple difference is what? A version. Like 16 में कुछ चेंजेस आए होंगे, 15 में चेंजेस आए होंगे, फिर कुछ चेंजेस 16 में भी आए होंगे। तो हम जो 16 में चेंजेस आए उनका नाम हमने रख दिया ECMAScript 7, और जो 15 में चेंजेस आए उनका नाम हमने रख दिया ECMAScript 6। क्लियर? ओके सर, क्लियर। Yes. Okay. So now we have a first important ECMAScript in ES6 or 2015 JavaScript launch let and const. So before understanding it, I'm going to my where I have to go. We have an array. Okay, no, not an array. Yes, so we have some section outline. Yes, so here we also talked about like when you want to declare the variables, we have three things. First is you are using var keyword, right? And we have a let and const, which is in what? ECMAScript 6, right? So now we are going to talk about let and const. So it is what? To declare your variable. It is a same as a variable var keyword. It also acts to what? To declare the variables. आप किसी भी variables को like something, if you want to do something like this, where a is equals to 5, you can also write something like let a is equals to 5. आप var से define करो, let से define करो, या you can declare with const a is equals to what? A 5. So you can declare your variable with let and const as well as var keyword. So what is let and const? So it is used to declare your variables. Okay. So what is the difference of var and let and const? Why they introduce let and const? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एज अ इनिशियल आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा, बट जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स करोगे, रिएक्ट में रिएक्ट का कोड लिखोगे, जावा आप बैकएंड का कोड एक्सप्रेस.js में लिखोगे, नोड.js में लिखोगे, तो वहां पे आपको इसका बेनिफिट समझ में आएगा कि ये बहुत ही पावरफुल चीजें हैं। सो देयर आर डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू यूज var कीवर्ड और let कीवर्ड और a const कीवर्ड. So we have to understand about these key difference between using the var or let or const, where we use let or where we use const or where we can use var keywords. So I'm going to explain it. So because आपको पता है ना कि जावास्क्रिप्ट में कभी भी आप डेटा के साथ खेलते हो तो पहले क्या करते हो, आप अपने वेरिएबल डिफाइन करते हो, जहां पे वो क्या करते हो, उस डेटा को स्टोर करते हो उस वेरिएबल के अंदर. Before declaring, if you're not declaring any variable, is it possible to fetch your data? ये possible है कि आप अपने डेटा को फेच कर पाओगे? No, sir. Possible है.
नहीं है ना। जैसे अभी हिमांशी ने कोड दिखाया था जहां पे where button is equals to add जो भी get element by id करा था, तो उसने क्या करा था, बटन नाम के वेरिएबल में she wants to store the which button whose id is what enter. Is it clear ना? तो उस बटन नाम के वेरिएबल में वो बटन आके स्टोर हुआ था जिसकी आईडी क्या थी, इंटर थी. Is it clear now? So in that case, we have a let and const to define our variables. So I'm going to define what is the key difference between let and const. और ये चीजें बार बार देखना, और जो जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ ना, ये बार बार रिपीटिवली आप लोग वीडियोस देखो, और कहीं पे भी अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है ना तो उसको बार बार देखो, फिर डिस्कस करो एक दूसरे से, या अगर अपने जो भी आपके ट्यूटर है उनसे डिस्कस करो. क्या मेरे से मत करना यार, ये तो फंसाओगे, परेशान करोगे. ठीक है, मेरे से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो नाउ आई एम गोइंग टू define our first variable with what, a const. So here I'm going to define something. I'm going to define firstly let. So now I'm going to give something like let player is equals to today we are going to cover a very बहुत छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके डे टू डे लाइफ में जब आप प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड करोगे तो ये डे टू डे लाइफ में आपके आएंगे. तो प्लीज इसको अंडरस्टैंड करना, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और ये बहुत ही फिल्टराइज्ड कॉन्सेप्ट्स हैं. तो ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप 90% केसेस में आप यूज कर रहे होगे. तो आई एम नॉट लाइक मैं वो टॉपिक्स मैं ये छोड़ के मैं आगे भी बढ़ सकता था और ये प्रोजेक्ट्स में भी बता सकता था, बट मैं एक ब्लॉक बनाना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्ड कर पाओ अपने कॉन्सेप्ट को. लाइक ये पता है ना कि व्हेन यू आर इन जब आप जूनियर होंगे तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स जूनियर क्लासेस के लिए होते हैं तो फिर धीरे धीरे सीनियर क्लासेस में जाते हो तो भी प्रॉब्लम होता है. लाइक अगर आपने 5वीं 6वीं 7वीं में पाप किए होंगे तो 8वीं 9वीं 10वीं में भी फिर वही होता है कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं था. यार जब आपने 9th 10th नहीं पढ़ा होगा तो 11th 12th में भी दिक्कत होता होगा कि यार 9th 10th ही क्लियर नहीं हुआ मेरा, तो अच्छे से तो 11th 12th में समझ ही नहीं आ रहा है, फिर आपका इंटरेस्ट चला जाता है. दैट्स वाई मैं बिल्ड कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करो पहले. ठीक है, तो नाउ आई एम असाइनिंग अ वेरिएबल प्लेयर and here let player is equals to I am giving something name which is Tom. Okay. So this is your Tom, and now I am assigning some boolean value. Let something like what player या कुछ भी बोल दो. लेट प्लेयर टॉम है तो boolean value if I want कि batsman, let batsman is equals to true. It is a boolean value. Is it clear now? So now I am giving something like using a condition here. So what? And now I am also assigning something like let experience is equals to what? 5. So it is supposed to 5 years. So I am using something like if experience is greater than 4. Okay. Yes. So if experience is greater than 4, so now I am giving something like console.log, and here I am giving something what? Player. So I want a console.log, a player. So we have defined with let, and initially we defined with what? A var keyword. But here we defined with what? A let keyword. What is the benefit of let and var? So now I'm just replacing this with var. Initially I'm replacing with a var keyword. Okay. So if I write console.log and now I'm just like player, I'm giving player console.log. It is outside this block, if block, and it is inside this if block, right? Okay. So I'm passing some argument here, which is inside and
I'm passing one argument here which is outside. Okay. Now I'm going to save this file, and we have where it is. Okay. So yes, ठीक है. So I'm going to open this index file. Okay. Yes. Okay. So when we use a where keyword, then inside the if block, it shows Tom, and outside it also shows Tom. Okay. We know that कि yes, it have an access. यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सेस का, तो ये अपने ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, और आपके बाहर भी उस प्लेयर का एक्सेस मिल रहा है और इस इफ के अंदर भी मिल रहा है. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई राइट समथिंग लाइक लेट and replace with let keyword. Now going to save this thing, refresh the page, and now so it is also same inside Tom and outside Tom. So now I'm just giving some another thing, and now I'm going to change let something like let. Okay, yes, I'm going to write let player. So let player is equals to what? Normal John. Okay, ठीक है, ध्यान से समझना, अभी समझ में आएगा. ठीक है. So when I declaring a variable inside it and console.log inside a player, then it shows a John, but outside it shows a what? A Tom. ठीक है. जब आपने let से define किया, if you replace it with where keyword and now you are using a where, so there is a difference. When you are using a where keyword, then inside this block of code, your player is what? A John, and outside the where keyword, your player is what? A John. जब आपने where से डिफाइन किया है, तो इनसाइड और आउटसाइड आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट जॉन मिल रहा है. बट when you are defining with let keyword, देखना, ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको where की केस में आपको क्या मिल रहा है? जॉन मिल रहा है, दोनों साइड, लाइक इफ के अंदर भी और बाहर भी. बट when you are using let keyword, when you are using a let keyword, then भी जॉन था where के साथ, बट जब आप रिफ्रेश करोगे तो आउटसाइड आपको where में टॉम मिल रहा है. आउटसाइड क्या मिल रहा है? टॉम मिल रहा है. और इनसाइड क्या मिल रहा है? जॉन मिल रहा है. कुछ डिफरेंस समझ में आया? When you are defining your variables with where keyword, then what happens कि इनसाइड आपको क्या मिल रहा था? जॉन मिल रहा था, और आउटसाइड भी जॉन मिल रहा था. बट when you are defining your variables with let keyword, then inside जॉन मिल रहा है और आउटसाइड क्या मिल रहा है? टॉम मिल रहा है. कुछ की डिफरेंस मिला? सर ये लोकल होस्ट वाला है ना? सॉरी सर ये ग्लोबल और लोकल वाला मतलब जो सिनेरियो रहता है वो यही है ना? या यस. सो अब कुछ इश्यूज, मतलब स्कोप ओरिएंटेड है ये. सॉरी यस, तो अभी समझ में आया. डोंट वरी. तो ये अभी तो मैं बस डिफरेंस समझ में आया कि जब आपने where डिफाइन किया था और आपने let डिफाइन किया, तो देयर आर सम चेंजेस. let के केस में आउटसाइड आपको टॉम मिल रहा है, बट इनसाइड द आपको क्या मिल रहा है? जॉन मिल रहा है, क्योंकि आपने जॉन को क्या, प्लेयर को क्या कर दिया था? रीअसाइन कर हुआ है. बट जब आपने where यूज किया था तो दोनों जगह जॉन मिला था. व्हाई इट इज सो? व्हाट हैपनिंग? क्या हो रहा है इसके साथ? ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि लेट और कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा? मैंने बोला ना कि जब कुछ वर्जन चेंजेस आते हैं, व्हेन यू हैव सम अपडेट इन योर वर्जन्स, तो वो कुछ न्यू फीचर्स लेके आते हैं. और न्यू फीचर्स का काम क्या होता है? यूजर एक्सपीरियंस को
इजी बनाना, ना ही कि क्या करना, टफ करना। जब आप कुछ अपडेट लाओगे अपने एप्लीकेशन में तो आप चाहोगे ना कि कुछ कुछ इंटरेक्शंस और भी इजी हो, आपके कोड्स और भी ऑप्टिमाइज्ड हो, है ना। आप एक बार में अगर आप डायरेक्टली कोई चीज बिल्ड नहीं कर सकते हो ना। फेसबुक भी जब बिल्ड हुआ था तो इनिशियली फेसबुक एक समथिंग, मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं मिस कर रहा हूँ, बट वो क्या था, एक स्टोर था, बुक स्टोर नहीं, अमेजोन की बातें कर रहा हूँ। अमेजोन क्या था, एक बुक स्टोर था। अमेजोन स्टार्ट हुआ था एक बुक स्टोर से, धीरे धीरे वो और भी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन और भी अच्छे टेक्निक्स लाए और आज के डेट में वर्ल्ड के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना। तो सिमिलरली जब कुछ नए टेक्निक्स आते हैं तो वो आपके कोड को क्या करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ ऑप्टिमाइज टेक्निक्स लाते हैं। तो व्हाट इज द बेनिफिट, आपको, आप में से कुछ लोग थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे कि यार यहाँ कुछ स्कोप का पंगा आ रहा है। अब ये समझना है कि स्कोप का प्रॉब्लम क्या है। तो जब आपने वेर से डिफाइन किया था, ध्यान से समझना मेरी बातों को, मैंने यहां वेर से रिप्लेस कर दिया। तो मैं रिफ्रेश करता हूं, दोनों साइड मुझे जॉन मिल रहा है। So here I am going to say let is a block scope variable. Block scope variable. When you initialize your any variables with let keyword, then it is what, a block scoped variable. What it means, it is a very important concept. ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि लेट कॉन्स्ट में, क्योंकि जब आप कोड करते हो कंफ्यूज हो जाते हो और ऐसे आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं रैंडमली। एक कंसोल का क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आउटपुट बताओ, छोटे छोटे कोड देके, और वो लेट और कॉन्स्ट में घुमा देते हैं बहुत सारे डेवलपर्स को। इवन एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी इसमें फंस जाते हैं। रीजन बिहाइंड कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि लेट कॉन्स्ट का कॉन्स्ट चल कैसे रही होती है। ओके, तो मैं क्या किया कि अब मैंने वैर से रिप्लेस कर दिया। अब दोनों साइड हमें मिल रहा है जॉन। अब प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है ये देखेंगे। सो पहले समझते हैं ब्लॉक स्कोप्ड क्या होता है। ब्लॉक स्कोप क्या होता है? If you are using these two curly braces, so inside these two curly braces, any variables which is defined with let keyword are the block scope of this what? This two what? Parentheses. So if you define something like let name is equals to others, inside this block let address is equals to something like anything. So this is okay. So what happens कि okay, यहाँ मुझे बंद करना होगा ना। तो अब अगर मैं इस दो करली ब्रेसेस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा लेट कीवर्ड के साथ, देन दीज आर दी ब्लॉक स्कोप। सर ये तो समझ में आ रहा है कि अगर दो करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी चीज आप डिफाइन करोगे लेट से, देन दीज आर दी ब्लॉक स्कोप। बट व्हाट आर दी बेनिफिट ऑफ ब्लॉक स्कोप, क्यों ही यूज कर रहे हो? इतना अच्छा तो वैर था, अकेला वैर ही सब संभाल रहा था, तो आपको ऐसा क्या मिल गया कि लेट यूज इंट्रोड्यूस करना पड़ा, है ना। वैर भी तो काम कर ही रहा था हमारा, बट डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। What happens when you are using this var keyword, then the problem is that ki if you are defining a global variable or variable and assign some string to it, so here you have a player which is equals to Tom, a player which is equals to what? A Tom. So when you reassign this variable inside this block of code, inside these two curly braces, then it changes the what? A global variable value. Now player is what? Now player is equals to what? A John. So inside this block of code, your variable is changed your global value. Inside this block of code, if you reassign any variable which is defined in the parent scope, so it reassigns the value of the parent scope. So if any developer don't know about this code, ये आपने कोड लिख दिया किसी फाइल के अंदर, कोई दूसरा डेवलपर आया, या कभी आप ही 10-20 दिन 25 दिन 1 महीने 2 महीने बाद काम कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि आपने यहाँ पे प्लेयर जॉन असाइन किया हुआ है। If you want another condition
एंड इफ यू वांट समथिंग लाइक इफ प्लेयर इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपको क्या पता है कि प्लेयर की वैल्यू क्या है, टॉम है, आप ये भूल गए, आपने लिख के ये भूल गए आपने, तो आप क्या लिखोगे, इफ प्लेयर इज इक्वल्स टू टॉम देन डू समथिंग, देन डू समथिंग, कुछ भी कराना चाहते हो। बट आपके किसी ब्लॉक में क्या हुआ है, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब ये प्लेयर टॉम नहीं रह गया, इस प्लेयर की वैल्यू, इस प्लेयर की वैल्यू चेंज होके क्या हो गई है, जॉन हो गई है। बट आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, टॉम को एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो आ गया। मींस आपका वेरिएबल जो स्कोप है ये कॉन्ट्राडिक्टेड तो हो गया ना, क्योंकि आउटसाइड अब इस प्लेयर की वैल्यू क्या है, टॉम ना है, टॉम ना हो कि जॉन है। तो when you are accessing this player, अब something like if you reassign this value is equals to variable player is equals to something like others, then now inside this block player is what, others. So outside the block it is also replaced with what, others. So अब क्या हुआ कि एक वेरिएबल की कितनी वैल्यूज हो गई, तो आपका कोड फटेगा कि नहीं फटेगा, ये बताओ पहले, यहां समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आपने एक Yes, वेरिएबल sir. किया जिसकी वैल्यू 5 दे दी है, और आप किसी कंडीशन के अंदर आके उस वेरिएबल की वैल्यू ही चेंज कर दी और 6 कर दी, तो इंटायर कोड के लिए वेरिएबल ए की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। तो जिस चीजों के लिए आपने ऑपरेशन 5 के लिए लगाया होगा वहां कोड क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि यू आर जस्ट लाइक मतलब एग्जॉस्ट कर जाओगे कि भाई क्या हो रहा है, यहां से भी कोड फट रहा है, वहां से भी कोड फट रहा है, इधर से भी कोड फट रहा है, तो प्रॉब्लम पता ही नहीं चल रहा है, फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर तुम अब क्या करोगे इसके आगे तो मैं नहीं बता सकता। बट इतना समझ में आ रहा है ना कि इफ यू आर यूजिंग द var कीवर्ड देन इट reassigns the value, but what is the difference with let? If you are assigning with this let keyword and now you are using let here, so inside this block, inside this two curly braces, inside these two curly braces, the player have their own scope. Player is this block have their own scope which only exist inside these two curly braces. It is clear ना? So अब अगर आप यहाँ reassign करते हो let से, तो this inside this block आपकी वैल्यू प्लेयर की क्या होगी, जॉन होगी, बट आउटसाइड क्या होगी, प्लेयर की वैल्यू टॉमी होगी। तो आपके दूसरा कोई भी कोड इससे क्या होगा, अफेक्ट नहीं होगा। These are the power of let. So what is let? So let is a keyword, तो मैं आप बोल सकता हूं let is a keyword which is introduced in what, ES6, which is basically a block scoped variables. So it means if you assign any variable in particular block, the access of that variable is inside that particular block. Outside this block, the value is same as at the previous. So इस inside this block आपकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट आउटसाइड आपकी वैल्यू वही होगी जो पहले होगी। तो अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम है लेट के साथ? और वैर और लेट में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। सर फंक्शन के अंदर वेर जैसे काम करता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेट वैसे ही काम करता है। यस अब इसका प्रकाश का अच्छा क्वेश्चन था। सो ओके, तो थोड़ा सा मैं हल्का ऊपर बढ़ता हूँ। तो क्या होता है, अब कर्ली ब्रेसेस तो भाई आप लोग बोलोगे कि सर फंक्शन में भी कर्ली ब्रेसेस होता है ना, तो अब जो वैर कीवर्ड्स होते हैं, वैर इज, आप बोल सकते हो
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वैर? ये बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू, और ये पूछते हैं, इवन ये जूनियर से भी पूछते हैं और सीनियर से भी पूछते हैं, सबसे पूछते हैं वैर और लेट में। तो डिफरेंस क्या है? तो अब क्या होता है कि वैर इज फंक्शनल स्कोप्ड वेरिएबल। फंक्शनल स्कोप्ड वेरिएबल, व्हाट इट मींस? तो अब क्या होता है कि वैर क्या होता है कि किसी फंक्शन के अंदर अगर आप वैर डिफाइन करोगे ना, तो इट एक्ट्स एज अ लेट कीवर्ड, आपको लेट की तरह ही वो वर्क करता है बट फंक्शन के अंदर। बट मैं एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डू नॉट यूज सर बात सुन लेना पहले। डू नॉट यूज वैर कीवर्ड इन योर प्रोजेक्ट, स्टार्ट विथ लेट एंड यूजिंग लेट एंड कॉन्स्ट। रीजन बिहाइंड कि वैर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। So if you want to define any variable, then start with let. Is it clear now? यस सर। यस सर सर जहाँ हम प्रैक्टिस वेर के साथ कर रहे थे, अभी हमें लेट के साथ स्टार्ट करनी है। Correct. Okay. So now यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, किसका केशव पूछ रहा था कुछ, बताओ केशव। Can you explain in English, sir? Not understand in Hindi. Yes. So I have said that ये let and const. Have you understand let and what is let keyword and what is var? I have already written here. Yes, sir. It is clear now. What is Yes, sir. That's clear, sir. okay? So it is clear. So okay. So now let is clear ki what is the benefit of using let. So let is a block script. Okay. Anyone have any doubt regarding let keyword? कोई भी हो तो पूछ लो, अभी पूछ लो। Yes, कोई भी पूछ सकता है। क्लियर है सर। क्लियर है ना? ठीक है। Okay. यस सर। Yes, sir. Clear. So now I am going to using our second variable, which is basically a what? A const variable. So what is const? So now suppose you have a player which is Tom, and you are initialized with let keyword. Now I am going to initialize this with what? A const keyword. What? A const keyword. So if I use something like this is a const keyword, and now I'm going to use with this const, and now refreshing the page. Okay. So what happens? What is the difference between const and let? Is if you have something like player and you are given some Tom. So I'm just removing this from here. So now I'm giving something like player is equals to others. And I'm going to control this log a player. Yes. So it gives you an error. Uncode type error, assignment to constant variable. If you use let and okay, so let, yes. Now when I refresh the page, yes, inside others and outside भी others है, क्योंकि आपने रीअसाइन करा है, बाहर ही रीअसाइन कर दिया है, तो प्लेयर की वैल्यू आपने चेंज कर दी others से. So what is const? Const is a variable. If you want to not change the value of that variable, if you do not want to change the value of that variable, then you have to define these variable with what? A const keyword. Let and const are introduced in ES6. So the main key difference between let and const is if you want to give a value and want कि कोई भी आके इसको reach assign ना कर दे इस value को, then we have to use a what? A const variable. Is it clear? Something like अगर आपने कुछ मान लो कि like आपके पास एक variable है const and you want something like API key, and this is your variable API key, and this is something like HTTPS, and this is www.xyz.com. This is your what? API endpoint.
सो अब मान लो ये तुम्हारा यूआरएल है तुम्हारे वेबसाइट का। अब इस यूआरएल को कोई आए और तुमने एपीआई की नेम दे दिया, कहीं पे किसी फाइल में तुमने दे दिया कि ये हमारा क्या है, यूआरएल। आप ये यूआरएल ही मान लो, दिस इज योर यूआरएल ऑफ द वेबसाइट, और आप ये यूआरएल यूज कर रहे हो फ्रीक्वेंटली अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। बट कोई आया और स्क्रिप्ट, क्योंकि आपके पास अब बहुत सारे फाइल्स हो जाएंगे, कोई आया और यूआरएल की वैल्यू आके चेंज कर दिया और टॉम दे दिया कि नाउ यूआरएल इज इक्वल्स टू टॉम। ठीक है, यूआरएल को क्या दे दिया, टॉम दे दिया। अब क्या होगा कि व्हेन यू आर यूजिंग लेट, तो इनिशियली तो यूआरएल की वैल्यू क्या थी, XYZ, बट किसी ने आके यूआरएल की वैल्यू टॉम दे दी। सो नाउ यू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस URL to what, a single string name. So what happens कि your entire course broke. So when you assign a something which is special and you don't want to change the value of that variable, then you have to use what, a const, instead of using what, a let. So when you someone comes in your like in your project and just want to change the URL of Tom and refresh the page, it shows something कि constant variable. तो आपकी डेवलपर या कोई दूसरे डेवलपर को he understands कि something which is assigned to URL which is important and we don't want to change, we don't have to change this variable because it have some special meaning and it have some specific something which is assigned to that variable. So कोई भी आके इसको चेंज नहीं करेगा, वो इसको क्या करेगा, हटा देगा। समझ आ रहा है ना कि इफ यू यूजिंग कॉन्स्ट देन वो वैल्यू आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो, बट व्हेन यू आर यूजिंग लेट एंड वेर यू कैन रीअसाइन योर वेरिएबल। यस सर। इज इट क्लियर? एनी डाउट? सर अमन का माइक कर दो सर, अमन का माइक। Who is Aman? Okay. So any doubt? So कोई बताओ या कोई डाउट है तो। हेलो सर, थोड़ा प्लीज Yes. हिंदी में भी रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली क्या है इंग्लिश इतना ये होता नहीं सर। ओके, सो मैंने क्या बोला है कि अगर आप लेट से डिफाइन करते हो तो लेट तो समझ में आ गया ना, लेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, लेट क्लियर है सर। यस। सो आई वांट कि कोई वेरिएबल आपने असाइन किया कॉन्स्ट के साथ और उस कॉन्स्ट वेरिएबल पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दे रखा है, ठीक है? तो आप चाहते हो कि ये यूआरएल कोई भी यूज करे ना, इसके स्पेशल मीनिंग हो और स्पेशल एक असाइन कर दिया कुछ वैल्यू इसके साथ, जिसका जो आप चाहते हो कि इंटायर प्रोजेक्ट में ना इसकी वैल्यू चेंज ना कोई कर पाए, इसकी वैल्यू कोई चेंज ना करे। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेर एंड लेट यू यूज कॉन्स्ट। सो कोई भी डेवलपर आएगा और अगर इस यूआरएल की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेगा देन इट थ्रोज व्हाट, एन एरर, कि आप इस यूआरएल को रीअसाइन नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर कोड। तो आप इसको फिर से रीअसाइन नहीं कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग कॉन्स्ट, बट इफ यू आर यूजिंग लेट देन यू कैन रीअसाइन द वेरिएबल। क्लियर है सर? हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि कॉन्स्ट का मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो जाएगा, हम उसको रिचेंज नहीं कर सकते हैं। तो सर अगर हमने वो भी चेंज कर दिया तो कोड भी चेंज हो सकता है ना? यस। लेकिन वो एक अगर हमको स्पेशल समझ में सर, वो एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए, फीचर्स के लिए यूज कर सकते हैं ना हम कॉन्स्ट को, तो यस, जो कभी तो चेंज ना हो। हाँ, तो आप जब कॉन्स्ट यूज करोगे ना तो कहीं पे भी आप उसको रीअसाइन करने की कोशिश करोगे ना इंटायर प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो रीअसाइन नहीं होगा, वो आपको एरर थ्रो कर देगा। तो मान लो कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समथिंग लाइक योर वेबसाइट का यूआरएल। अब यूआरएल तो आप चेंज नहीं करोगे ना बार बार आके, तो आपने एक यूआरएल दे दिया और कॉन्स्ट असाइन कर दिया, या समथिंग लाइक यू वांट अ एपीआई की, लाइक आप अगर एपीआई इंटीग्रेट करोगे तो यू हैव समथिंग एपीआई की जो कि स्पेशल कुछ XYZ ऐसा कुछ होगा, ये नंबर, ठीक है, ऐसा कुछ होगा एपीआई की। अब इस एपीआई की से क्या होगा कि तुम्हें एपीआई की एक्सेस मिल रही होगी, इस एपीआई से क्या मिल रही होगी, एपीआई की एक्सेस मिल रही होगी, ठीक है?
ये वाली वैल्यू के साथ। अब कोई आया और इस एपीआई की को कुछ और वैल्यू दे दिया, तो तुम्हारा पूरा कोड ही ब्रेक हो जाएगा ना। तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन, इफ it is sensitive information, then you have to use what, a const instead of using let and where तो यूज करना ही नहीं है, it is not a good practice. But when you are using const, it means कि आपने कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन असाइन करा हुआ है उस वेरिएबल को, जो प्लीज कोई आगे दूसरा गलती से भी चेंज ना कर दे। फॉर दैट केसेस आपने क्या कर दिया, कॉन्स्ट असाइन कर दिया। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ओके, बेसिकली वैर एक ऐसा डब्बा है जिसमें सब कुछ रह जाता है, यस, जिसको जहाँ पे भी जाके खोलो वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें उससे निकल सकती है। you can say something like this, but okay, so now I am going to take some another example of let and calls. So अभी तक समझ में आया कि देखो let यूज तब करना है किसी भी करली ब्रेसेस के अंदर, इफ यू आर यूजिंग अ फॉर लूप जहां पे करली ब्रेसेस आता है, स्विच केसेस, वहां पे आप असाइन करोगे अपने वेरिएबल्स को विद द हेल्प ऑफ व्हाट, let कीवर्ड। If you want to assign some sensitive things, then you can assign with what, a const variable. And where is something which is what, a functional scope variable. It means कि अगर वो आप किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड में आके उस वैल्यू को चेंज करते हो तो एंटायर जगह वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा कि आपका कोड फट सकता है, बहुत जगह से कोड क्या हो सकता है, फट सकता है। तो दैट्स वाई दी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि अगर आप कोई चीज असाइन कर रहे हो तो यूज लेट, अदरवाइज अगर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो यू हैव टू असाइन व्हाट, विद कॉन्स्ट वेरिएबल। इज इट क्लियर ना? अभी तक क्लियर है ना? इतना समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन अनदर एग्जांपल। सो आई एम गिविंग समथिंग, मैं ये हटा देता हूं प्लेयर यहां से। नाउ I am giving something which is what, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि let and const, but I am talking about something special which is what, an object. Initially when you are working with object, you assign with something like variable object is equals to this curly braces, and inside here you have a player, something which is right, like I am giving Bob. Now you have experience, and this is what, 5 years. And now I can give a what, batsman, which is what, a false. Okay, so this is an object which is assigned with what, a var keyword. अब एक डिफरेंस समझना, देखो ये डिफरेंस बहुत ही छोटा डिफरेंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और बहुत टाइम तक ये समझ में नहीं आता है लोगों को, तो मैं बोलूंगा कि ये चीजें समझ लेना भी। तो मैंने बोला कि यार वैर से तो डिफाइन ही नहीं करना है, वैर से क्या करना है, डिफाइन ही नहीं करना है। तो यू कैन यूज, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वैर फॉर ऑब्जेक्ट्स और array, you can use const. Const object is equals to something like this. क्योंकि अभी तक हमने जो const किया था वो स्ट्रिंग के साथ नंबर्स, बूलियंस, जो प्रिमिटिव टाइप वैल्यूज थे, बट अभी मैंने ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे कर दिया, प्लेयर है इसके अंदर, एक्सपीरियंस है एंड बैट्समैन है, दीज आर द की वैल्यूज पेयर विद दिस ऑब्जेक्ट एंड बी असाइड विद const वेरिएबल। इज इट क्लियर? ओके, नाउ आई एम गिविंग something like I have to add, I'm going to write something like object is equals to now 5. Object is equals to what? Now 5. What it gives you? कोई बताएगा मुझे? एरर।
ये क्या देगा? error. Let me check. Yes, uncaught type error, assignment to a constant variable. So you can't reassign the value for that variable, which is assigned with what? A const. But you can do one thing. You can add properties or you can add any properties in object. आप इस object में properties add कर सकते हो. Yeah, if you write something like const array and this is equals to something like 1 2 3 1 2 3 4 5, and now I'm going to change this value. Array is equals to now 10, so it's throw you an error, right? Assignment to a constant variable from line number 30, right? Line number 30. So you have one thing which you can do with this thing. What this is, if you want like object, if you want to add some property, how can you add? If you want object dot name, so you want to assign a key value in this object. So object dot name means you want to assign this key in this object. So you can write object dot name is equals to what you can want others. So now if you write console.log an object and refresh the page, yes, name is what? Inserted inside this object. So you can insert a key value inside the object, but you cannot reassign the entire object with another data. डिफरेंस समझ में आया? कॉन्स्ट के साथ आप रीअसाइन कर, आप उसके अंदर की वैल्यूज ऐड कर सकते हो, बट आप इंटायर ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते. Yes, sir. Similarly, if you want something like array.push and you want to push 6 and you want console.log and now array, and I'm going to just comment this out and now I'm refreshing my page. Yes, 6 is inserted inside your existing array, but you cannot reassign this array to something like array is equals to 7 or array is equals to another array. If you want something like this, मैं push हटा देता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ array is equals to 1 2 3 4 5 6. What it gives you? It gives you what as output? क्या देगा ये? क्या देगा बताओ? Error देगा, because now you are reassigning another thing on that variable which is already exist with const. So when you refresh the page, assignment to constant variable. So you cannot reassign the const variables, but you can put or you can add a key value or any element inside object or array with const variable. So when you are defining your array and object, अगर आप array and objects define करते हो, तो instead of using var a is equals to something, you have to use what? Const. So जब भी आप const use कर रहे, आप array और object के साथ काम कर रहे हो, तो initialize करो किसके साथ? Const के साथ. तो की डिफरेंस समझ में आया ना? आप उसके अंदर चेंज कर सकते हो. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट की डिफरेंस है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है. और ये मैं मतलब इवन देयर आर इंटर्न्स जो कि प्रैक्टिस में थे एंड दे हैव अ 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, उन्हें भी ये चीजें कहीं कहीं क्लियर नहीं हो रहे होते हैं कि फॉर अगर आप असाइनिंग की बात करोगे, रीअसाइनिंग, कॉन्स्ट और लेट की बातें करोगे, तो वहां के ये लोग बहुत अच्छे से फंस जाते हैं. तो ये चीजें मैं इसलिए बार बार बहुत फोकस वे में बता रहा हूँ कि रीजन बिहाइंड कि आपको यहाँ कॉन्स्ट और लेट में प्रॉब्लम ना हो. तो अभी तक कॉन्स्ट समझ में आ गया, लेट समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. सर वेरिएबल में पूरा एरे चेंज कर सकते हैं तो बाद में असाइन कर सकते हैं, कॉन्स्ट में सिर्फ हम उसे ऐड कर सकते हैं, पूरा एग्जैक्टली हो पाएगा. आप मॉडिफाई कर सकते हो एग्जिस्टिंग एरे को, बट यू कैन नॉट रीअसाइन द एग्जिस्टिंग एरे और ऑब्जेक्ट विद कॉन्स्ट. ठीक है ना?
तो Yes, sir. अब समझ में आ गया होगा लेट एंड कॉन्स्ट की व्हाट इज लेट एंड व्हाट इज कॉन्स्ट. सो लेट इज ब्लॉक स्कोप. सो व्हाट इज द बेनिफिट. बेनिफिट भी समझ में आ रहा है ना, लेट का बेनिफिट क्या है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि उस ब्लॉक के अंदर आप अगर उसकी वैल्यू चेंज करते हो तो उस ब्लॉक के अंदर ही वो अपना काम करेगा. ब्लॉक के बाहर उसकी कोई औकात नहीं रह जाएगी. ब्लॉक के नहीं. बाहर वही रहेगा जो पहले से था. तो इससे क्या हुआ कि आप अपने ब्लॉक ऑफ कोड में तो जो आपको चाहिए था उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर दिए, बट बाहर का कोड आपसे क्या हुआ, अफेक्ट नहीं हुआ. तो यू आर यूजिंग लेट. एंड फॉर कॉन्स्ट इफ यू वांट to give some sensitive things, if you want to store some sensitive information, then you can use with const. And if you want to use any object or array, then you can initialize with const variable. So you have an access to modify the array and object, but you can't reassign that object or array. Clear है? समझ में Yes, sir. Clear है. बहुत सही. ठीक है. Yes, sir. अच्छी बात है. यस सर. Yes. So सर now, सर Yeah. लेट में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है जबकि वेरिएबल में नहीं मिलती है अपनी. यस, वेरिएबल में क्या होगा, वो आपके ग्लोबल आपके वेरिएबल स्कोप को ही पॉल्यूट कर देगा. तो क्या होगा ना कि आपने तो अपने हिसाब से वो वेरिएबल नाम दे दिया, बट कोई और आके उसको चेंज कर दिया ना, तो बहुत जैसे कोड फटने लगेगा. जबकि सर कांस्टेंट जो वेरिएबल है तो वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है ना. यस, कॉन्स्ट तो ये बोल रहा है ना कि आपको रीअसाइन करने ही नहीं देगा. तो जी सर. अगर आपने मतलब यूज करना है तो फिर आप लेट यूज करो, बट अगर एरे एंड ऑब्जेक्ट्स यूज करते हो तो वहां कॉन्स्ट यूज करा करो, क्योंकि उस एरे एंड ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई कर सकते हो, उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हो. ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि कोई आपके एरे को आगे चेंज ना कर दे किसी सिंगल वैल्यू से. समथिंग लाइक कि आपने कहीं पे एरे पे लूप लगाया हुआ है, ठीक है, एरे पे क्या लगाया हुआ है, लूप लगाया हुआ है. कोई आया उस एरे की वैल्यू 5 कर दिया जल्दी से आके, तो अब 5 पे तो लूप नहीं चलेगा ना, लूप तो एरे पे ही चलेगा. तो अब क्या होगा, तुम्हारा कोड कहाँ के फट रहा होगा, लूप के पास आके कोड फट रहा होगा. अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि यार लूप क्यों नहीं चल रहा है मेरा, है ना. तो वहां पे फिर Yes. तुम क्या करोगे, डिबग करोगे, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे. वैसे वैसे अगर तुम उस एरे के साथ 10 जगह लूप लगाए होगे तो 10 जगह से तुम्हारा कोड ब्रेक कर रहा होगा. जी सर. तो दैट्स व्हाई कि फॉर एरे एंड ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉन्स्ट, बिकॉज कोई आके उसको वेरिएबल को चेंज करे तो अब वो चेंज ना हो. यस, अगर कोई मॉडिफाई करना चाहता है तो यस यू कैन मॉडिफाई इट, बट यू कैन नॉट चेंज इट. बट ये मॉडिफिकेशन का भी केस आएगा तुम्हारे पास, डोंट वरी. ठीक है, अभी तक समझ में आया? यस सर, क्लियर है. तो प्लीज इन वीडियोस को डेली बेसिस पे थोड़ा देखते रहना, सब प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि अभी तो समझ में आएगा, फिर भूलते जाओगे सब, तो भूलना नहीं है. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir, we'll practice. सो नाउ आई एम गोइंग टू, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया हमारा लेट एंड कॉन्स्ट, अच्छी बात है. So I'm going to comment it out, and now I'm going to cover one another thing in ES6, which is what, destructing. What is destructing? देखो ये जब रिएक्ट यूज करोगे तो ये मैं डिस्ट्रक्टिंग 50 जगह बोलूंगा, लेट कॉन्स्ट भी मैं 50 का 100 जगह डिफाइन करूंगा, यूज करूंगा. तो व्हाट इज डिस्ट्रक्टिंग? So something like, if you have an object and this is your what, object. Okay, I'm just going to copy it, and now yes, this is your object, right? So if you want to access this player, what is the value of player inside the object? Initially or before, when we are learning the object concepts, then if I want to console this player, then we can write something like what, console.log, and now object dot what, player, right? Is it with problem? Yes ma'am. Yes, so it gives you Bob. So when something, अगर मुझे बार बार ये object dot player चाहिए होगा तो मैं क्या करता था, एक वेरिएबल में उसको क्या करता था, स्टोर कर लेता था. एक वेरिएबल में क्या करता था, स्टोर कर लेता था. ओके, सो नाउ आई कैन राइट समथिंग लाइक व्हाट, लेट. आप लेट से करो, आपने ऑब्जेक्ट कौन से दिए, लेट से ही कर लेते हैं, कोई नहीं, क्योंकि बट ये ब्लॉक स्कोप नहीं है तो कौन से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. सो नाउ आई वांट कॉन्स्ट प्लेयर, मैंने एक वेरिएबल दिया प्लेयर,
और इस प्लेयर में अभी अगर मैं कंसोल करूंगा तो ये क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा ना, तो कॉन्स्ट प्लेयर इज इक्वल टू, नाउ आई एम गिविंग समथिंग लाइक ऑब्जेक्ट डॉट प्लेयर, ऑब्जेक्ट डॉट प्लेयर. So I am removing this console from here, and now I am just consoling this console.log, and now player. What it gives? It gives you a bob. Similarly, if you want this experience, okay, what is the experience of this object? So what you can do, const, you can assign any variable, something like this also, but I am giving something experience. Experience is equals to, okay, my experience is wrong, so I am going to copy, paste, and now object dot what, experience, right? So if you want to console this experience or something, I'm just going to console again, and now inside this player I'm going to console what, experience. Yes, it gives you 5, right? Sorry. So if you want to access the key values, then you have to do something like this. But there is a concept of destructing where you can use it with very easy manner. How can you do that? So if you want to get the value of any key which is inside this object, you can do in a very efficient manner. And how can you do that? मैं इसको कमेंट कर देता हूं और मैं इसके आगे लिख देता हूं, not good approach, not good approach. ठीक है, ओके. सो अगर आप डिस्ट्रक्टिंग यूज करोगे तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, you can use a const, and here const, we can use a curly braces, and inside this curly braces I, which is equals to what, object. ध्यान से सिंटैक्स समझना. देखो मैं तभी बोलता हूं कि अब पॉइंट क्या है ना कि प्रोफिशिएंसी तभी आता है जब आप एक पेरेंट लैंग्वेज को बना के काम करते हो. मेरी बात को ध्यान से समझना. प्रोफिशिएंसी मींस कि आप एक लैंग्वेज के सिंटैक्स को सीख जाते हो और उसके कॉन्सेप्ट्स को गैदर कर जाते हो, तो क्या होता है कि आपके लिए सारे फ्रेमवर्क्स इजी हो जाते हैं. ठीक है, बट तो इसलिए ये सारे सिंटैक्स इसलिए इजी है कि अगर आपके इजी बोल रहा हूं, अगर जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हें आती हैं, तो यू कैन learn anything, like you can learn Node.js, you can learn React.js or a Vue.js or a AngularJS, do whatever you want. You learn Next.js, you also learn TypeScript, सब चीज जान जाओगे सब. बट अगर तो दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि एक लैंग्वेज पे ना क्या होना चाहिए, प्राइमरी फोकस होना चाहिए. अगर एक लैंग्वेज अच्छे से आती है ना, तो यू कैन डू इन अ वेरी इफिशिएंट वे, और आप अच्छे से कोडिंग भी कर पाओगे. तो 10 लैंग्वेज सीखने के पीछे मत भागो, एक ही लैंग्वेज सीखो बट अच्छे से सीखो. Okay, so now I want to access this player which is a key of that object. So आपको क्या करना है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो जो चीजें चाहिए वो आप क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो. So if I want कि give me a value of player and experience which is inside that object, you can simply do player experience with these two curly braces, and which is what, from which object you want to give access this value. So your object name is what, obj. So if you write something obj which is your object, so you can access the key values from that object. So if you write something like now console.log, and you want a player, and simple console.log, oh yeah, what, yes, so I have what, experience. So now when you, oh sorry, yes, now I'm refreshing the page. Yes, I have Bob and 5. So this is what called object destructing. What is called, this is called object destructing. So इससे क्या हुआ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग से, कि आप अपने ऑब्जेक्ट से किसी भी की का
वैल्यू एक्सेस कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दिस लाइन ऑफ कोड। सो अगर आप मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का नेम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, समथिंग लाइक कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट 2, and it have some another properties like name, and this name is, यार मैं अपना ही नेम प्रमोट करता हूँ हमेशा, address, and this is what, okay, Noida. So if you want access of this name from this object 2, you can simply do what, const this curly braces, and inside this curly braces I want the access of this name variable, so you can do what, name is equals to what, object 2. So if you do something like console.log object 2, then you refresh the page, yes, okay, sorry क्या कुछ बंद नहीं हुआ था क्या, कुछ गलत है क्या? नहीं सर, नेम लिखना ना आपको यहाँ पे सर, नेम नेम लॉग में ऑब्जेक्ट 2 ने नेम आ गया। sorry, yes. So this name, now I'm refreshing the page, yes, you have access of this what, a name key which is inside the object. So object destructing समझ में आया ना कि what is object destructing? यस सर। ओके, सो अब आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी वेरिएबल में आपने स्टोर करा फिर उस वेरिएबल को एक्सेस करा, आप सिंपली क्या कर सकते हो, डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो यहाँ क्या हुआ कि ये जो 5 लाइन का कोड है, मान लो कि आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर 50 की वैल्यूज होंगे, तो हर की को आपको असाइन करना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कंसोल करना पड़ेगा। तो देयर आर लाइन ऑफ कोड, मान लो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर 100 लाइन है, तो आपको 100 बार वेरिएबल असाइन करनी पड़ेगी, है ना, और 100 बार वेरिएबल असाइन करके क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। तो यू कैन सिंपली डू, आपको जो जो कीज चाहिए वो आप क्या कर सकते हो, इस कर्ली ब्रेसेस में लेके उस ऑब्जेक्ट से निकाल सकते हो। तो है ना इजी, अच्छी फीचर्स है ना? यस सर। यस सर। बट सर इसमें ऑब्जेक्ट का जो की है अगर डुप्लीकेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है ना? तो भाई ऑब्जेक्ट का की डुप्लीकेट हो जाएगा मतलब अगर आपने एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 प्ले जो बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने प्लेयर एक्सपीरियंस बैटमैन डाला हुआ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी आपने नेम एड्रेस और मान लीजिए बैटमैन आपने डाल दिया, और नीचे जाके आपने ऑब्जेक्ट 2 को एक्सेस कर लिया, मतलब बैटमैन का नेम, तो अगर ऊपर का बैटमैन और नीचे का बैटमैन में फिर प्रॉब्लम हो सकता है ना, मतलब नीचे हम लोग क्या सिर्फ उसका जो की का नाम है उसी से एक्सेस कर रहे हैं ना। देखो तो वही चीज है ना कि यहाँ पे हम ग्लोबली आपको दिखा रहे हैं, बट ये चीजें आप कहीं ना कहीं किसी फंक्शन के अंदर कर रहे होगे ना किसी स्कोप के अंदर कर रहे होगे। हाँ समझ रहे हो ना, अभी तो तुम्हें बस मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बट ये जब यूज करोगे तो किसी ना किसी वेरिएबल किसी ना किसी स्कोप के अंदर यूज कर रहे होगे, तो उस स्कोप के अंदर आप यूज करोगे ना उस वैल्यूज को। राइट, तो वहां पे तो डुप्लीकेट मिलने का चांस ही नहीं है, स्कोप तो चेंज ही कर लोगे ना। अभी तो मैं ग्लोबली दिखा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ, दैट्स व्हाई मुझे ग्लोबल दिखाना पड़ रहा है। बट आप जब प्रोजेक्ट्स में यूज करोगे तो सबका अपना स्कोप होगा, उसी स्कोप के अंदर वो एक्सेस हो पाएगा, उसके बाहर की दुनिया से उसको क्या मतलब है। स्कोप इज समथिंग कि इट्स देयर ओन वर्ल्ड, उस दुनिया में आप जो भी करो, बाहरी दुनिया को उससे कोई मतलब नहीं है। लाइक जब आप पार्टी करते हो तो साउंड अपने घर में बजाते हो तो इतना ही साउंड बजाओ कि बाहर वाले परेशान ना हो, है ना। अब बाहर वाले परेशान होंगे तो फिर क्या होगा, झगड़ा होगा सर। हाँ, तो फिर क्या, ऐसे ही तुम्हारा कोड भी फटेगा, कोड भी लड़ाई करने लगेगा, नहीं यार मेरी वैल्यू तो ये है, तुम्हारी वैल्यू ये कैसे हो गई। फिर क्या होगा, कोड खुद में लड़ लेगा, फिर कोड तुम्हारा फट जाएगा। तो समझ रहा हो ना, तो ये सब कुछ वही है जो आपके ठीक है। ओके, नाउ ठीक है। ओके, सो यहां तक तो समझ में आ गया आप लोगों को, अच्छी बात है। अब आगे वी हैव, ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू learn about a third concept, which is a what, template string। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट कौन समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग समझ में आया, टेम्पलेट स्ट्रिंग अब हम समझेंगे, ठीक है। सो व्हाट इट कैन डू, नाउ आई एम गोइंग टू गिव समथिंग लाइक
देखो कहीं भी कॉन्स्ट से डिफाइन हो तो समझ लेना उसको तुम रीअसाइन नहीं कर रहे हो, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इसके साथ। आई एम यूजिंग वन वेरिएबल कॉन्स्ट नेम, नाउ आई एम गिविंग समथिंग निहाल, ठीक है। And again I am using const what age, which is what something 26, and now const age, it is equals to, अब बोल दो डॉग, ठीक है। तो आपने 3 वैल्यूज असाइन करा है, फर्स्ट इज नेम वेरिएबल, सेकंड is एज वेरिएबल, एंड थर्ड इज स्टेट वेरिएबल, and you want to access these things, you want to access these things in what, in our code. So I want, with the help of these variable, we want to show something. So what, so I'm using const and I'm using something like masses. Now this masses is equals to what, so what a template string. So if you want to access these variables inside a string, it means I want to say this is your string, this is your a normal string, and you want कि जो भी वेरिएबल हो उस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू हो वो शो करे यहाँ पे। हाउ कैन यू अचीव दैट? आई वांट समथिंग लाइक, मैं लिख के बताता हूँ, लाइक hello, and I want this name variable, and then after we have what, something like, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, hello plus name plus, okay, so you can your, then you can write plus, and with this age plus hello, प्लस आप लिख सकते हो is, ओके, सो मैं यहाँ स्ट्रिंग ही पास करता हूँ, your age is what plus, sorry, this is your dynamic value age plus and you have, आप इस एज इसको हटा दो, इसको यहीं लगा दो, क्यों कंफ्यूज हो गया, like this, ठीक है, and you have what, this age, or before using you can use this add. So what it can do, it adds the, okay, कोई कोई नेम में यूज हो रहा है क्या, नहीं कुछ करा है, ठीक है। सर जहाँ पे आपने डॉग लिखा है उसके पीछे को नहीं लगाया, क्या बोलते हैं, सॉरी सर आपने जो पेट वेरिएबल बनाया यहाँ पे सर, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस नेम एंड एज एंड पेट के बिहाफ पे वट एवर इट कम्स फ्रॉम योर डेटाबेस, आई वांट टू शो दिस मैसेज टू योर यूजर। समथिंग, जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो और कभी कोई पॉपअप आता है कि हे आदर्श, या कोई भी हो गया, लाइक हाय चंदन, यू आर you have post something new, कुछ मैसेज आता है with your name, तो name is what it gets from your database, it gets the age, whatever name is coming in your name variable, and whatever the age and pet is coming, it shows the same message for all the user. Only the things which is changed is what, name, age and pet. So these are the what, dynamic values. These can be changed on your data. If your data is changed, then this name, age and pet is changed, but all the remaining things are what, same.
जब आप इसको सेव करोगे, एंड नाउ आई एम गोइंग टू console.log एंड हियर आई एम गोइंग टू गिव मैसेज, देखता हूँ पेज रिफ्रेश करके क्या मिलता है. यस, हेलो निहाल, योर एज इज 26 एंड यू हैव डॉग. ठीक है, बट इट इज नॉट अ गुड अप्रोच. इट इज नॉट अ गुड अप्रोच. तो नॉट गुड अप्रोच. इनिशियली जावास्क्रिप्ट के साथ हम यही करते थे, ऐड करते थे विथ व्हाट, अ प्लस ऑपरेटर. तो आपको पता है ना, स्ट्रिंग को अगर स्ट्रिंग के साथ ऐड करोगे तो क्या होगा, वो ऐड कर देगा. स्ट्रिंग को नंबर के साथ ऐड कर दोगे तो वो ऐड कर लेगा. समथिंग लाइक हमने बात किया था ना, वो आदर्श +2, तो आदर्श 2 आ जाता था, है ना. तो हमने ऐसा ही कुछ किया यहाँ पे प्लस ऑपरेटर के साथ. बट दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच. सो व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच इज टेम्पलेट स्ट्रिंग. सो व्हाट यू कैन डू विथ टेम्पलेट स्ट्रिंग, आप कैसे मैनेज करोगे टेम्पलेट स्ट्रिंग को. सो नाउ आई एम गिविंग const message is equals to, and now you can start with these two, what इसको क्या बोलते हैं यार, मुझे भी नहीं पता सर. टिल्टेड इन्वर्टेड कॉमा, backticks बोलते हैं, backticks. Yeah, so these are the backticks. So inside these backticks you can write something like, अब ध्यान से समझना, मैं चाहता हूं कि hello is static, so hello, and with hello after this a space, and then you have to use a dollar keyword, and with dollar keyword you have these two brackets. It means inside this bracket you have a dynamic access, so you can use the name, hello name, ठीक है, your age is, hello name, your okay, sorry, I'm going outside it, tactics, your age is what, again dollar, this bracket is, and you have a what, again a dynamic value, so you have to write something, you have a date. When you console.log this message, right, I'm going to refresh my page. Yes, hello Nihal, your age is 26 and you have a dog. So when you are when you want to make your string dynamic, if you want to print something in which some parts are dynamic, here what is the dynamic part, Nihal age, 26 against whatever you pass in the variables. So these are the Nihal 26 and dog is dynamic. So when you change something like Nihal to John, and you can change something like 20 and cat. So when you refresh the page, hello John, your age is 20 and you have a cat. So with the help of this template string, you can access of you have an access of a string with the dynamic values. So आपको start किससे करना है? You have to start with this backticks, and what is anything which is dynamic, you use this dollar and then the bracket, and inside the bracket you have to pass the variable name. So is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So it is a quite important topic, like होता क्या है when you are working with a practical scenario. मैं बताऊं something like कि जब आप कभी भी filters लगाते हो, मतलब ये थोड़ा स्टैंडर्ड अभी नहीं समझ में आएगा, बट ये हम यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, बैकटिक्स, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, तो वहां पे आप लोगों को समझ में आएगा. तो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, अभी तक समझ में आया ना ये व्हाट इज टेम्पलेट स्ट्रिंग? यस सर. ठीक है. Yes, sir. सर अगर जैसे इसमें पैट है, अगर किसी के पास में पैट नहीं हो तो फिर उस जगह पे ऐसा कुछ बताइए ना कि अगर नहीं हो तो वहां पे लिखा हुआ आ जाए यू डोंट हैव और समथिंग एल्स, ऐसा कुछ.
तो you can pass something like if you have a pet, then you can write pet. Otherwise, something you have not pet. You have a you have what something you have कुछ word बताओ यार. Binary operator लगा देंगे सर यहाँ पर. Something like XYZ मैं चाहता हूँ. XYZ तो अच्छी बात नहीं है. You have. You don't have any pet. You don't, तो फिर मुझे don't यहाँ लगाना पड़ेगा ना. तो ये लाइन चेंज करना पड़ेगा. You have या हटा देते हैं. नो एनी पेट, कुछ भी लिख दो भाई. तुम्हें यही चाहिए था ना. तो अब Yes, ये भी sir. चेंज हो जाएगा. तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो सॉरी, अभी कैट मिल रहा है ना. पेट मिल रहा है तो उसको पेट मिल गया है ना. Okay, sir. यू हैव कैट. बट अगर मैं कैट पेट हटा ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है. अब मैं देखता हूँ. सॉरी, पेट इज नॉट डिफाइंड. पेट इज नॉट डिफाइंड. ओके, पेट इसको चाहिए. तो मैंने, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अगर पेट है तो ओके आई कैन राइट समथिंग. सर हम इसमें पैट लिख लें पर लेकिन पैट की वैल्यू ना दे. मैं ऐसा करता हूँ. यस, यू हैव नॉट एनी पेट. तो ये वैल्यू तो आपको कीवर्ड तो साइन करना पड़ेगा, बिकॉज ये पता ही नहीं चल पाएगा कि ये पेट है क्या. बट मैंने अभी एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया. जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग पास किया, इट मीन्स व्हाट, कि अब ये कंडीशन समझ में आ रहा है ना. Yes, sir. अगर ये पेट है तो पेट दिखाओ, अदरवाइज ये दिखाओ. तो अभी पेट में क्या मिल रहा है? एम्प्टी मिल रहा है. Empty. एम्प्टी मीन्स व्हाट? फॉल्स. एम्प्टी मीन्स व्हाट? फॉल्स. False. So it is not true. So it gives you what? Not any pet. Pet. तो यहाँ क्या आ गया? You have not any pet. Clear है? Yes, sir. Okay. अच्छी बात है. ठीक है. Now I am going to do something different, and this is what. तो तीन चीजें हमने ये सर अभी ये लेट कॉन्स्ट, टेम्पलेट स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग. यस, हु इज दिस? निखिल बोल रहा हूँ सर. यही चीजें अगर हमें ऑब्जेक्ट से पेज करके उसमें दिखानी है तो करके देखना भाई. प्रॉब्लम आएगा तो पूछना. सब चीजें मैं कैसे बता दूंगा. क्या पूछ रहा हूँ बताओ. अभी जो ये है ना कॉन्स्ट नेम, तो जैसे कि कांस्टेंट एक ऑब्जेक्ट ही बना दिया और उसके अंदर ये पैरामीटर है नेम, एज और पेट, तो वो चीजें एक्सेस होंगी क्या डायरेक्टली? देखिए देख लेते हैं यार. उसी बड़ी बात है. कॉन्स्ट and you want something like this object, and inside this object you have a name, right? Yes, exactly. यही चाहते हो ना. हाँ. तो John, and now okay, मैं ऑब्जेक्ट 3 दे देता हूँ क्योंकि ऊपर से डिफाइंड है. ठीक है. अब नेम and you have age which is 24, and now you have pet which is what. ठीक है. अब आप चाहते हो कि ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो. तो यू हैव टू सिंपली पास व्हाट, दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट. सॉरी, आप पहले तो देखो दो चीजें कर सकते हो. मैं नेम हटाता हूँ, obj3 कर देता हूँ एंड डॉट नेम कर देता हूँ. सिमिलरली obj3 डॉट एज कर देता हूँ. सिमिलरली obj डॉट, अरे यार, obj डॉट पेट एंड सिंपल. फिर यहाँ भी obj डॉट पेट कर देता हूँ. देखता हूँ एक्सेस है कि नहीं है. यस, है ना एक्सेस. हेलो जॉन, योर एज इज 24 एंड यू हैव नॉट एनी पेट. अरे भाई क्या हो गया? कहीं और कंसोल लगा है क्या? मैं ये पहले क्या. ठीक है ठीक है ठीक है. अब देखते हैं. ऑब्जेक्ट के बाद में 3 होगा. पेट डॉट ऑब्जेक्ट 3 डॉट पेट. 3 नहीं लगाया आपने. अच्छा सॉरी मैंने यहाँ गलती करी. यस, तो आप अब ये भी कर सकते हो. ठीक है. प्रेस द पेज. यस, यू हैव अ डॉग. और आप इससे भी स्टैंडर्ड वे कर सकते हो कि आप यहाँ सिंपल कर लो कॉन्स्ट और यहाँ लिख दो नेम, एज एंड पेट इज इक्वल्स टू व्हाट, obj3. अब क्या होगा कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये जो डुप्लीकेशन है, रिपीटेशन ऑब्जेक्ट 3 बार बार आप यूज कर रहे हो, ये आप यूज हटा के आप सिंपल पेट यूज कर सकते हो.
ठीक है, अरे समझ में आया? यस सर। यस, कोई भी चेंज नहीं आया। आप सिंपली आपने क्या कर लिया, डिस्ट्रक्टिंग भी कर लिया, आपने कॉन्स्ट भी यूज कर लिया, आपने टेम्पलेट स्ट्रिंग भी यूज कर लिया। कितना कूल है। देखो कोडिंग से इजी कुछ नहीं है और कोडिंग से टफ भी कुछ नहीं है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन लेवल, आप कितना Yes, sir. डेडिकेटेड हो कोडिंग को लेके। Once our concepts will clear, so we will do. यस, यही मेन चीज होता है कि देखो कोडिंग वही चीज है भाई, कंपनीज आपको आप जो मांगते हो वो दे रही हैं, तो वो भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप कुछ डिफरेंट हो और लोगों से, तभी तो आपको पैसे दे रहे हैं। तो और दैट्स वाई इन कोडिंग बहुत आपके पास बहुत स्कोप इसलिए भी होता है कि बिकॉज आप जो सीख के जा रहे होते हो ना, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और लाइक जो नॉर्मल जो प्राइवेट जॉब करते हैं, मैं किसी भी जॉब को लेके मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी रिस्पेक्टफुल जॉब है। इधर कोई वॉचमैन भी है तो वो भी कुछ रिस्पेक्टेड काम ही कर रहा है, चोरी तो नहीं कर रहा है। तो इट इज लाइक कि जब आप कहीं पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हो, तो आप खुद में आपको डिफरेंशिएट फील होगा कि यस यू नो समथिंग बेटर देन क्राउड, क्राउड से कुछ डिफरेंट जानते हो, जिसके कारण आपको कुछ डिफरेंट तरीके से आपको क्या किया जा रहा है, अप्रोच किया जा रहा है और डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। दैट इज समथिंग, समझ रहे हो ना? भावनाओं को समझो। Yes, समझ गए। नहीं समझो भाई। ओके ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कवर। ओके ठीक है, सो फोर्थ important concept which is what, अरे अटेंडेंस ले लीजिए प्लीज। who is this भाई, किसको जल्दी है? जल्दी जाना का चाहिए। हम शांतनु मिल जाता है इसलिए। सर, एक्चुअल में आज थोड़ा सा बाहर आए हैं और फोन में बैटरी भी अब कम बची हुई है। ठीक है शांत, तुम याद रहोगे, मैं तुम्हारे अटेंडेंस बना दूंगा, जा सकते हो। ओके सर। So now I am going to learn about default arguments. Default arguments. Okay, so what is this? So default arguments भी ES6 में आया था, एक अच्छा फीचर है। So something like if you write some function and you give some name, print val, val means value, and now in argument you have something name is okay. I'm just going to yeah, ठीक है ना? ओके, सो नहीं, अभी मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? सो नेम, एज एंड पेट, एंड नाउ यू वांट टू रिटर्न सेम दिस masses. So you can write something like const masses is equals to hello name, your age is something, and pet is not pet. When you call this function and pass this name, age, and pet arguments, then it gives you some value. So I am going to return this masses. या समथिंग लाइक आप सिंपल ये भी कर सकते हो, इस मैसेज वैल्यू वेरिएबल में स्टोर ना करके यहां से भी रिटर्न कर सकते हो, वो भी सेम काम करेगा, या कंसोल करके चेक भी कर सकते हो। नाउ व्हेन यू कॉल दिस फंक्शन प्रिंट val, you have to pass some arguments, and if you pass something like others 26 and pet is what, dog, it is dog, right? When you call this function, okay, because you are returning something, so I'm going to comment this out and console dot, oh sorry. Okay, now console dot log, and here we have a message. Okay, ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ, yes hello others, your age is 26 and you have dog. ओके, तो ये तो नॉर्मल फंक्शन है जो कि हमें पता है ना? ये तो पता है ना सबको? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? No sir. Now I am going to use a default arguments. What is default arguments? So in default arguments, you can pass a default
argument something like this, like I am giving something unknown and is what, something a default value, which is I am going to give like not specified, and paid default. Okay, so I am giving something a default argument in this function. These are the parameters, name, age, and pet are the parameters of this function, and these are the default arguments of the corresponding parameters. So if you call this function without any what? Without any arguments, then it take a default argument. So I'm just going to copy this and just, yeah, I'm just calling this function and I'm not passing anything from here. So it takes the default argument. So just let me check. When I refresh the page, yes, hello unknown, your age is not specified and you have default what? You have default pet. तो पेट में यहाँ पेट मिल रहा है इसको, तो ये पेट ले रहा है, नहीं तो नॉट एनी पेट आता, तो मैं यहाँ पेट लिख देता हूँ, डिफॉल्ट पेट. हेलो अननोन, अननोन के साथ मैं यूजर लगा देता हूँ. हेलो अननोन यूजर, your age is not specified and you have a default pet. But when you pass something from here, which is others 26 and dog, so default arguments are overridden with your arguments. So something like when I call this page, yes, hello others, your age is 26 and you have a dog. So अगर आप default arguments देते हो तो वो default arguments लेगा. अगर आप कोई argument pass नहीं करते हो तो when you are not passing any argument from your function call, then it takes a default argument. But when you pass any argument from this function, then it takes that arguments. Is it clear? So this is called what? Default arguments. किसी को कोई दिक्कत? No sir. No sir. Yes. प्रतीक. Yes sir. समझ आ रहा है भाई? हाँ सर. ठीक है, अच्छी बात है. Okay. So it is like. सर एक क्वेश्चन था मेरा. जी पूछिए. हाँ, और जो आपने 26 जैसे यहाँ से पास किया, मैंने दो ही मतलब जो दो पैरामीटर है मैंने यहाँ से पास किया, एक पैरामीटर वहां से डिफॉल्ट रखा, तो भी ये चल जाएगा ना? Something like this. हाँ, You have a default pet. हाँ जैसे आपने हाँ यहाँ पे राइट. हाँ, तो आपको डिफॉल्ट पेट आएगा लास्ट में और स्टार्टिंग में आदर्श और 26 वाला पकड़ेगा यहाँ से, राइट ना? यस. ओके सर. ठीक है. ओके, तो 3-4 कॉन्सेप्ट हमने समझा आज, और इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो दीज आर दी वेरी फ्रीक्वेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप डे टू डे लाइफ में करोगे, तो डोंट वरी. और इसके बाद हमारे पास कुछ और भी अच्छी चीजें हैं. नाउ आई एम कवरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज एरो फंक्शन. आप लोगों में से नाम बहुत लोगों ने सुना होगा एरो फंक्शंस. You heard about arrow functions? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. कल की क्लास में मुझे कुछ याद आ रहा है कि किसी ने कॉल बैक फंक्शन का नेम लिया था. किसी ने लिया था ना? किसने लिया था? जिसने लिया था उसको याद नहीं है. बहुत सही. सर कॉल बैक तो नहीं सर, एरो फंक्शन लिया था. कॉल बैक नहीं कर रहा. हाँ जी सर. मैं ज्यादा सुन लिया था ना. ठीक है. नहीं सर कॉल बैक नहीं सर, एरो फंक्शन पूछा था. ओके. नहीं एरो फंक्शन तुमने पूछा था. यस. हाँ. ओके, तो ठीक है. तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर द एरो फंक्शंस. ओके, कॉज कल यार मुझे कुछ याद आ रहा है कि समथिंग किसी ने मेरे को बोला था कि स्क्रिप्ट 3 में जैसे ऐड इवेंट लिसनर लगाए हैं और उसके साथ हमने एक कॉल बैक फंक्शन हमें बनाना पड़ता है. तो दिस इज ऑल्सो कॉल बैक फंक्शन. आप आर्गुमेंट में एक फंक्शन पास कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड अ कॉल बैक फंक्शन. तो दिस फंक्शन इज अ कॉल बैक फंक्शन फॉर व्हाट? फॉर दिस ऐड इवेंट लिसनर. क्योंकि ऐड इवेंट लिसनर भी क्या है? फंक्शन है, तभी तो आप कॉल कर रहे हो ना, विद दीस 2 ब्रैकेट्स.
अगर आप मैं ये हटा दूं, अभी देखो अभी कहीं मैं थोड़ा पॉइंट से दूर जा रहा हूं, बट जनरल नॉलेज के लिए मैं ये चीजों को हटा दूं, तो ये क्या हो गया, ये तो एक फंक्शन ही है, ये तो एक फंक्शन ही है ना, एड इवेंट लिसनर. This is what Yes, sir. add event listener is a function. When you get Yes, sir. something inside here, तो आप यहाँ क्या देते हो, यहाँ आर्गुमेंट पास करते हो. तो this is your first argument, key press, which add event listener takes, and as a second argument, it takes a callback function. This is your callback function. हम जाएंगे इसके इसमें डीप जाएंगे, डोंट वरी, बट ये समझ लो कि एज अ सेकंड आर्गुमेंट व्हेन यू पास अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, देन दिस इज व्हाट कॉल बैक फंक्शन. ठीक है, तो अभी मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. ठीक है, चलो अच्छी बात है. आते हम ये 6 में थे. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द एरो फंक्शंस. What we have, if we have something function add, and if you take something two arguments here, which is a and b, and now you are returning something, return a plus b. Nice. When you call this function, you have to pass something arguments as a 2 3. ठीक है, और आप रिटर्न करने के पहले कंसोल करोगे तो ये ऐड करके दे देगा, है ना. यही होता था ना नॉर्मल फंक्शंस के केस में. But in arrow functions, way of writing the code is quite different. And what is the difference? Something you have to start with const variable. So const, and what is your the function name, which is add. So you can write something like const add. This two bracket, it means in these bracket it takes the argument. So now function is replaced with what? A const, then your what? A function name, then equal to, then after this, these two bracket, it means it takes two parameters. So I give A and B, and now you have to give something, this arrow. That's why it is called arrow function. So now what? Function is replaced with this const. This is your name of the function, then equals to, then this bracket, inside this bracket you take what? A and B as a what? Parameter, and then this curly braces starts. So here you can write something like return A plus B. So it acts same as a normal function. It acts as a same as a normal function. Okay, यहां तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? सर इसे हमें कॉल नहीं करना पड़ता? Sorry? Yeah, you have to call this function. Yes, you have to call this function something like this, 2 3, and now I'm going to just comment this function, and before returning this, I'm going to use console.log what? A. आप ऐसा कर लो ना, आप इस रिटर्न कराने के पहले इसको एक वेरिएबल में सेव कर लो, const result is equals to A plus B, right? ना, और मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ, console.log what? Result. देख लो, चेक करते हैं. Yes, it gives you 5. When you change the argument, like you pass 6, then you just refresh the page. Yes, you have 8. 8. Okay, so this is a what? A arrow function. This is what? A arrow function. So what? लाइन ऑफ कोड तो उतना ही लिखना पड़ता है ना उसमें जितना जो नॉर्मल फंक्शन में लिखते हैं. Yes, but actually एक बहुत ही मैं अभी बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, because this is too advanced. Like there is one concept in JavaScript which is a hosting. कोई जाके पढ़ना इस hosting के बारे में अगर interested हो तो. A concept of hosting where a normal function declarations are hosted at the top, but arrow functions are not hosted. And so एक concept तो ये है, but अभी आप देखो as a general practice आप arrow functions use करना, as a programmer आपको arrow functions use करना instead of using what? A normal function, because 2-3 चीजें होती है जो arrow function को powerful बनाती है, और मैं थोड़ा सा काफी डीप जा रहा है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा अभी, but there is some concept of hosting in which arrow functions have not
do any hosting, but normal functions do hosting, so it pollutes some global variables or global scope. And second is concept is what? It lexically bind the this keyword. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पॉइंट पे पूरी तुम्हारी oops कॉन्सेप्ट चलती है, which is object oriented programming. oops कॉन्सेप्ट. तो इन दो चीजों के लिए ये लाया गया था एरो फंक्शंस. तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना जनरल नॉलेज के लिए यूज करना है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ नॉर्मल फंक्शन यू हैव टू यूज और यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन व्हाट? अ एरो फंक्शन. क्लियर है? यस सर. कोई दिक्कत? ओके. तो अब ये मैं नहीं अभी मैं क्योंकि इसके अंदर जाऊंगा तो ये एक्चुअली एक बहुत ही अंदर टॉपिक है, बहुत ही लाइक बहुत टाइम देना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि मुझे भी मैंने भी बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े थे होस्टिंग और लेक्सिकली बाइंड दिस कीवर्ड oops कॉन्सेप्ट के अंदर कैसे बाइंड करते हैं दिस कीवर्ड को. तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही एडवांस है, तो डोंट worry about this, but on general practice you have to use arrow function. Okay, this one also important thing in arrow function. So if you have only one thing which it handles, like एक ही चीज आप हैंडल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ए और बी को ले रहे हो और ऐड कर दे रहे हो, यही कर रहे हो ना? तो you can write in a simpler way. What you can do, you can write something like add. I'm giving a name 2. And now I'm taking arguments A and B, and they're here because it have only one line of code, which is what? A plus B. It only do what? A plus B. So you can do something like this: A plus B. That's it. That's it. So now, if I just write something like, can I do something like this? Console.log, and here add. Sorry, where? Okay. Now I'm going to yes this. Okay, just going to refresh this page. Yes, I have access. Okay. Add to. अच्छा, तो अब दिख रहा है ना तुम्हें? मैंने add to को console.log किया है, और it gives you like when you pass something like 12, then it gives you 14 output. Yes, it gives you 14 output. What it means, if you have only one operation or one single line of code, then you can simply do with a one line of code in arrow functions. So अगर एक ही ऑपरेशन है तो आपको रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं है. यहां आपको अगर इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करना है तो आप क्या करते थे? रिटर्न रिजल्ट. यही करोगे ना? यही करोगे ना? या अगर आप वेरिएबल में स्टोर नहीं करोगे तो आप यहीं से रिटर्न करोगे. यस सर. समझ नहीं आ रहा है? बताओ सर. यहां ऐसा करते थे ना, रिटर्न ए प्लस बी. या नॉर्मल फंक्शंस में आपने क्या किया था? रिटर्न करा था ए प्लस बी. बट अगर एक सिंगल स्टेटमेंट है देन आपको जरूरत नहीं है कि आप रिटर्न यूज करो. यू कैन डू समथिंग लाइक दिस. इज इट क्लियर? यस सर. किसी को कोई दिक्कत है भाई? बताओ. So multiple value होंगे, then you have to use a bracket, these two curly braces, and after that you have to give some operations जो भी आप चाहते हो. Multiple line of code होंगे तो. But अगर आपको single operation कराना है तो आप ऐसे कर सकते हो. तो बताइए, कोई डाउट किसी को? कोई प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. ओके, ठीक है. तो यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अभी नाउ वी हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेटेंट कॉस्ट, एंड देन वी हैव समथिंग लाइक व्हाट डिस्ट्रक्टिंग, एंड देन आफ्टर वी हैव something like default arguments, and then have template strings, sir. Yeah, template strings, right? Then after we have arrow functions. Okay, this is cool. These are some important topics of ES6, and now I'm going to dig into a very crucial topic, or very important, or very कुछ भी बोल लो,
which is what a higher order functions. किसी ने नाम सुना है higher order functions का आज तक? यस सर। नो सर। कोई है, कोई बता सकता है मुझे थोड़ा बहुत हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में? अच्छा, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आया ना अभी तक? तो भाई देखो, इसका एक ही सॉल्यूशन है, जिसको थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है, इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि यू हैव टू रिपीटिवली यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोस और फिर अपने लिए एक नोट्स बनाओ। अगर देखो क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास लाइक हमें पेन और कॉपी की आदत होती है ना, कि यार कोई भी चीजें हम पढ़ते हैं तो पेन और कॉपी में लिखते हैं, पेन और कॉपी पे लिखते हैं। तो एक आदत बनाओ कि कॉपी पे ही लिखो स्टार्टिंग में, धीरे धीरे ये आदतें हटा के फिर हर चीज मैनेज करना है अपने लैपटॉप से, जो भी चीजें आपको करना है लैपटॉप से करना है। तो ऐसा कीजिए कि आप स्टार्टिंग में जो भी वीडियोस देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसको नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार कोड करके देखिए। ओके, तो कोई किसी ने सुना है व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शंस? कोई है? सर कल ही आपने नाम लिया था सर। यस सर, क्या लिया था सर? अच्छा, क्या लिया, क्या बताया था हायर ऑर्डर फंक्शन का? कुछ बताया नहीं था? बताया नहीं था, बस इतना ही कहा था हायर ऑर्डर फंक्शन बस। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं अब थोड़ा सा ठीक है, तो मैं जाता हूँ, मैं अब एक चीज और आप लोग बता दो। चलो, आपने एरो फंक्शंस भी जान लिया है, तो आई एम गोइंग टू कमेंट ऑल द थिंग्स। ठीक है, now we have some topic which is higher order functions. What is this? So higher order functions are something, higher order functions are the functions which take function as an argument or argument or return any other function, then it is called higher order function. Okay, so higher order functions are the functions which take function as an argument or return any other function, and it is called the higher order functions. What it means? So ऐसे functions जो अपने आर्गुमेंट में कोई फंक्शंस लेते हो या और कोई फंक्शन रिटर्न करते हो, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग सम एक्सप्रेशन इट रिटर्न सम अनदर फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन। डेफिनेशन समझ में आ रहा है? हायर ऑर्डर फंक्शंस आर दी ऐसे फंक्शंस जो अपने आर्गुमेंट में कोई फंक्शन लेता हो और रिटर्न करता हो कोई फंक्शन, दोनों में से कोई एक काम भी हो सकता है, तो वो क्या होता है? हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं। डेफिनेशन तो समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा, है ना? यस सर। तो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड इट। सो नाउ आई एम गिविंग सम एग्जांपल. So I have something called first, and inside this first we have something. This is an arrow function, right? The arrow function here, na? Yes, sir. Now inside this arrow function I am going to assign some variable which is name, and now name is equals to Nihal. Okay. So inside this function I am going to return some another function which is a second, which is what? A second. ये भी क्या है? एक फंक्शन है। तो inside this function I am going to write something const name is equals to Adarsh. ठीक है? And now I am giving something like
alert name. ओके क्या हुआ? अलर्ट नहीं लिया ना, अननोन क्यों आया? डिड नॉट मीन अलर्ट. व्हाट इट मींस? ओके सॉरी आई हैव टू पास दिस नेम इनसाइड व्हाट एज एन आर्गुमेंट ना. ठीक है, मैंने क्या किया है, एक फर्स्ट फंक्शन बनाया है, उसके अंदर एक वेरिएबल असाइन किया है. दिस वेरिएबल इज असाइन्ड अ नेम व्हिच इज इक्वल्स टू निहार. Then inside this function, I have one another function, which is a what? A second. Inside this second function, we have one name variable, which is now equals to others. And now I'm alerting this what? A name. So we know that when we have a definition of this function, then we have to return something from this function. बिना रिटर्न किए कुछ होता है नहीं होता है ना. तो नाउ आई एम गोइंग टू रिटर्न समथिंग सेकंड. ध्यान से समझना, मैंने कुछ ऐसा कर दिया इस कोड के अंदर. तो क्या है कि दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन. दिस इनसाइड दिस फंक्शन वी हैव अ नेम एंड वी हैव वन सेकंड फंक्शन, राइट. तो मैं क्या कह रहा हूं, अब ये दो आपके पास क्या है, एक वेरिएबल है एंड एक function है, which is inside this parent function, which is what? A first. I want कि when I call this first function, it executes and return what? A second. What it returns? A second. When it executes the first function, it returns you what? A second function. Second. So inside the second function, we have something alert. So what we can do, so now I'm going to call this first function. This first function. So what it can do, it can return the second function. Let me check. When I refresh the page, okay. So I have to what? Okay, I'm just going to assign this something as const new function, and now is equals to, this is equals to your what? A first function. हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमने क्या किया कि इसकी कॉलिंग को, फर्स्ट फंक्शन की कॉलिंग को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया. एंड नाउ आई एम गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन. So what it returns? Yes, this piece says others. How can it possible? I am calling this new function. It means this new function have this function which is assigned. So when you call this variable, it means it calls the what? A first function. So when you call the first function, it returns a what? A second. It returns a what? Second. So when it returns second, then second is what? Already a child function. So inside a child function, it have a name and it alerts you a name. But difference is what? This name is equals to others, but here name is equals to what? Anihal. ओके, तो अभी मैं इस नेम को हटा देता हूं, इसकी बातें करेंगे, डोंट वरी. बट अभी तक बताओ कि इज इट क्लियर कि हायर ऑर्डर फंक्शंस डेफिनेशन से, हायर ऑर्डर फंक्शंस आर द फंक्शंस व्हिच टेक अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट. हमने भी आर्गुमेंट नहीं लिया है. और मींस कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है. रिटर्न एनी अदर फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड अ हायर ऑर्डर फंक्शन. सो यस, दिस फंक्शन रिटर्न्स द अदर फंक्शन. This function returns the second function. It returns what? Another function which is what? A second. So this is an example of what? An higher order function. Is it clear? Yes. Yes sir. सर डेफिनेशन क्लियर है, लेकिन कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है समझ में नहीं आया. ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या किया है कि मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी मैं फर्स्ट को कॉल करूं ना, ये सेकंड फंक्शन को कॉल कर दे, मतलब रिटर्न कर दे. अब जैसे ये फंक्शन रिटर्न हुआ ना, देखो अब यहाँ पे ना एक पॉइंट आता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. एक्चुअली वी हैव अ कॉल स्टैक एंड मेमोरी हीप, है ना.
we have a call stack and memory heap. So whenever I'm just writing this, whenever any function returns something, then it is pop out from what? From call stack. मैंने एग्जांपल जब उसी टाइम बताया था कि जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है ना, तो उसका काम क्या होता है? खत्म हो जाता है। उसका काम क्या होता है? खत्म हो जाता है। When any function returns something, then it is pop out from the call stack. It means कि when you call this function, तो ये call stack के अंदर जाएगा और जैसे ये रिटर्न करेगा तो ये फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? पॉप आउट हो जाएगा, कॉल स्टैक से बाहर चला जाएगा. इट पॉप आउट फ्रॉम द कॉल स्टैक. बट हियर सेकंड इज व्हाट? हियर सेकंड इज व्हाट? Another function. So when it returns what? Another function. So this is a second function. So it have their own definition. So जैसे ही रिटर्न किया ना सेकंड, it means what? It calls this function. It calls this function. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने फंक्शन रिटर्न कर दिया, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस फंक्शन को कॉल कर दिया. तो जैसे कॉल किया तो अब क्या है कि मैंने अभी भूल जाओ ना नेम वेम के बारे में कि नेम कोलाइड कर रहा है कुछ. मैंने एक नेम अलर्ट इसके अंदर डिफाइन किया है और नेम हमने क्या कर दिया? अलर्ट कर लिया. So this is an example of higher order function. You can write something like this. I think it may be right. I'm not sure about it, but you can. Okay. Now I'm just refreshing the page. Yes, it also shows the others. It's do the same thing. मैंने क्या किया है? When you call the first function, it returns what? A second function. And here is the definition of second function. Here, this is the definition of second function. So when it returns the second function, it automatically get called. So it gives you the alert pop-up with name. So is it clear? हाँ सर अभी क्लियर है. Yes, sir. I think similar like something like where we are in the script. I think it may be right. Yes. So this is also an higher order function. तुम्हें समझ में थोड़ा बहुत अब आ रहा होगा. मैंने क्या किया था? This input have some event listener, and this event listener is what? A function. This event listener is what? A function. Is it clear now? Yes, sir. Clear. Yes. It takes two arguments. It takes two arguments. So first is an event and second is a function. So in our definition, a higher order functions are the functions which take a function as an argument or return any other function. It maybe takes an argument as a function. So yes, inside this function, it takes a second argument. This function takes a second argument, which is already a what? A function. This is a function, huh? So you can write something like this. I'm giving a small example. I'm just writing something like this and giving something name. So what? Event function. And now I'm just going to pass as a second argument. Event function. Is it clear now? Yes, Yes, sir. sir. So this function takes this as an argument, and this arguments have an event, so it takes and returns another function. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? Create element को क्या कर दिया? Call कर दिया. समझ रहे हो ना? इसने create list element को call कर दिया. तो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? समझ में चीजें की कैसे चल रही हैं? हाँ सर Yes. तो यहाँ मैंने वही काम करा है. मैंने जब भी न्यू फंक्शन को कॉल किया तो ये फर्स्ट कॉल हो गया. फर्स्ट क्या कर रहा है? सेकंड को रिटर्न कर रहा है. तो यस, अ फंक्शन which takes a function as an argument or returns some function, then it is called an higher order function. So it returns the second function.
So what it can do, it calls automatically when the first function returns something, and then it prints what it have a name variable which is equals to all others. Then it alerts the pop-up with name variable. So it is an example of what? An higher order function. Is it clear now? So interviewers ask you what is the higher order function, और it is something like कि interviewer पहले पूछ लेता है कि higher order function क्या है. अगर virtual interview हो रहा है तो वो सीधा बोलेगा कि screen share करो और please give me one demo example of what in a higher order function. So you can give you any example like something like this. Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. सर कॉल बैक फंक्शन Okay. भी हायर ऑर्डर फंक्शन जैसा ही होता है. Yes, yes, yes. बस थोड़ा सा minor difference होता है. तो we will talk about this. Don't worry. सर इसको फर्स्ट क्लास फंक्शन भी बोलते हैं क्या? फर्स्ट Yes. क्लास फंक्शन. Sorry? ठीक है. फर्स्ट क्लास सिटीजन्स बोलते हैं भाई. ओके. फर्स्ट क्लास सिटीजन्स बोलते हैं, बट वो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स आई थिंक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, नॉट एन फंक्शन. आई मे बी रॉन्ग. मैं शायद इसको भी फंक्शन एक फंक्शन को किसी फंक्शन के एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं, उसको जो फंक्शन होता है उसको फर्स्ट क्लास फंक्शन भी बोलते हैं शायद से. मे बी बोलते होंगे, बट हायर ऑर्डर फंक्शंस जनरली बोलते हैं उसको. ठीक है. तो ऑन नेक्स्ट लेक्चर आई एम just exploring or just defining a very important topic which is like देखो अभी जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना स्लाइव लेक्शंस में, तो ये आपको यूट्यूब से थोड़ा डिफरेंट वे में मिलेगा. रीजन बेहिंड की यहाँ हम वो चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं जो हम प्रैक्टिकल अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे. तो ऐसी सारी चीजें हम क्लियर करके बढ़ेंगे. तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट क्लोजर्स विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, and it have a very powerful like it makes the JavaScript so powerful. तो ये क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट भी हायर ऑर्डर फंक्शंस के साथ ही आता है. तो वी विल टॉक अबाउट द वेरिएबल स्कोप एंड व्हाट इज क्लोजर एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लोजर्स एंड ऑल. इज इट क्लियर ना? सो डोंट वरी. तो यहाँ तक हमें हायर ऑर्डर फंक्शन समझ में आ गया. तो प्लीज मेक श्योर करना है एक बार सब चीजें आपको रिवाइज करनी है अच्छे से. ठीक है? Yes, sir. ओके. सर एक से काम कर जितने भी अभी तक ना लेक्चर से आपके पास ये है ना स्क्रिप्ट फाइल्स वगैरह, वो एक जिप फाइल बना के सेट कर दो. चलो मैं कर दूंगा सेंटर से. यस. सो प्रतीक. Sir. भावेश. Present, sir. अमन कुमार सिंह. प्रेजेंट हो? यस सर. सर कल का बनाए. विनय प्रताप सिंह. कल प्रेजेंट. Present, sir. सागर मधोक. यस सर. प्रेजेंट सर. वराज संतोष. सर कोमल तिवारी. कोमल तिवारी. कुमारजीत. प्रेजेंट सर. हेलो सर, मैं प्रेजेंट हूँ सर. वरद बात कर रहा हूँ. प्रेजेंट सर. वरद. कुमारजीत प्रेजेंट सर. चंदन कुमार. यस सर. कुमारजीत भी प्रेजेंट है सर. हिमांशी. प्रेजेंट सर. दुपाती प्रणव. भावना. प्रेजेंट सर. फूलमाला. साक्षी देशमुख. जय किशन पांडे. अफजल अकबर शाह. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट अफजल. यार तुम्हारा नेम लेके ना मेरे को वो फील होता है राजा का नेम ले रहा हूँ मैं. अफजल अकबर शाह. प्रकाश. Yes, sir. वैष्णवी. सुजॉय.
सुजॉय सर रामधारी रविदास, निखिल त्यागी, औसफ अनवर, प्रेजेंट सर। आशीष रॉय, यस सर। ठीक है, केशव, प्रेजेंट सर। विजयराज सिंह, गनप्रिया गजबे, आशुतोष सिंह, यस सर। शांतनु रस्तोगी, शांतनु रस्तोगी, बंदेश, बंदेश, मोहम्मद साली, संतोष तिवारी, यस Sir, सर can I leave? या यू कैन, राहुल गेजवल, यस सर, प्रेजेंट सर। राहुल कहाँ से हो तुम? मैं हरियाणा से हूँ, पानीपत से। पानीपत से, जी। यस, ओके। आशुतोष गुप्ता, राहुल में वो एमडीयू का पता है? एमटीयू, रोहतक, रोहतक, रोहतक। हाँ हाँ, रोहतक हाँ, यहीं से यही है, 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से, पानीपत से। वहाँ मेरा फ्रेंड एक लेक्चरर है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, एमडीयू में? हाँ, मेन कैंपस में ही है। अच्छा। आशुतोष गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, निखिल रधाकर, निखिल रधाकर, प्रेजेंट सर। दिनेश कुमार सैनी, विद्या, प्रेजेंट सर। अथांग, प्रेजेंट सर। कुणाल सिंह राजपूत, प्रेजेंट सर। निमीश शर्मा, निमीश शर्मा, सोनम चौधरी, सत्यजीत, विपिन कुमार, कहना या विपिन कुमार, रंजीत रॉय चौधरी, प्रेजेंट सर। और रंजीत कुमार चौधरी, ठीक है। आशीष, प्रेजेंट। यस, आयुष कुमार सर, आशुतोष गुप्ता, प्रेजेंट सर। अच्छा, किसने बोला था? शान ने बोला था ना कुछ अटेंडेंस? यस सर। सर विपिन। क्या मैं? यस विपिन, तुम्हारा अच्छा, शांतनु रस्तोगी है ना? यस, ठीक है, ओके। तो ओके गाइस, या तो ओके, तो आज के लिए एंड करते हैं, बाकी ओके सर। यस, गुड सर। बाय। सर गुड नाइट सर। प्रेजेंट सर। आप